Good evening and welcome this evening. Episode number 37. तब तक हम लोग शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों और करीम के साथ भी बैठे. वेलकम रेहा राज. Apologies, I should have written down कि आज daylight saving है. Apologies for that because I think you guys didn't know what time we were starting. माफ़ी चाहती हैं और खेत के लिए इनकी बदा माफ़ी चाहते हैं. थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ और एक बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम रचाएंगे आज आपके लिए. बोला एंड लड़का लोगन, थैंक यू वेरी मच. रेडी मेल वेलकम. ऑफ कोर्स आज हम दे रहे हैं फिजियन $100 फिजियन. यस, वी आर गिविंग अवे, सो स्टे ट्यून्ड इन. अपने तमाम दोस्तों को इनवाइट कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा एंड सो दैट आज का जो शाम है रंगीन बनाएंगे. और फिजियन $100 आज किसके हिस्से में जाएगा वो तो देखने लायक ही होगा. और सवाल आज तो ये हीरो ने तैयार किया है क्योंकि आई डोंट यूजुअली गेट टाइम टू, और उतना होशियार भी नहीं हूँ इनकी तरह. ही इज अ होशियार फैला, तो यू नो सभी जगह पर वो ही राइट्स एवरीथिंग डाउन. मुस्की देखो, हमारे हैं गद्दर मुस्की आज. एंड अनम्यूट कर देने तो गुस्सा जी ऊपर. कैसे अनम्यूट करे इसका? ओ यहाँ से अनम्यूट करे इसका. ये भी क्या बोले ना, बोले मरता क्या ना करता ना, तो हमें बता दे ये करो वो करो, करेक्ट पड़ी. बॉस बता दी से, बॉस बताई दी से. बॉस बता दी से. तुम शेयर कर दिया कि नहीं कि आज भी भूल गया शेयर करेंगे? हम शेयर कर दिया पर अब जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई फॉरगॉट समथिंग. आई जस्ट गिव मी अ सेकंड. Sure, go for it. फिजी टाइम तुम जानो कैसे रहना. फिजियन टाइम हम लोग के सबके आदत है स्लो में स्टार्ट करे के. हाउ हैव यू गाइस बीन? कैसे है आप सब लोग? आपका जो 2 हफ्ता कैसा बीता वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं. If you got anything something interesting to share with us, आप भी शेयर कर सकते हैं. दुनिया में कुछ हो रहा है. I don't watch television so I don't know what's happening around the globe. न्यूज़ के ही तत्व पे. तो अगर आपके पास कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ यू वेलकम टू शेयर एनी न्यूज़ विद अस. और ताकि हम भी समाचार को अब तक पहुंचाते रहेंगे और साथ साथ में आपका जो समाचार है हमारे पास आए. सो कैसे हैं आप सब लोग? $100 फिजियन आज आप देने के लिए रखे हुए हैं आपके साथ. और कुछ समाचार भी लेकर आए हैं, कुछ न्यूज़ है और कुछ अन्य तरह के डिटेल्स आपको आज हम देंगे. It's 2 hours from Fiji time actually, so we are 2 hours behind. And तो अभी पर फिजी में कितना बजा हुई? फिजी में 2 hours ahead है, so they are like 8:30. 8:30, okay. Yep, 8:30. Okay, all right, okay. Happy Ramnavami and Happy Ramadan. दोनों को हैप्पी रामनवमी, हैप्पी रमजान और हैप्पी लैंड भी कहना चाहेंगे जितने भी लोग लैंड के पीरियड से गुजर रहे हैं. कब है लैंड ब्रो? It's happening now. I think 40 days के रहे हुए, so it's a continuation process. Okay. So last Friday I went to Pulle's place and so we had the Lent celebrations there. So those who don't know Pulle कौन है? It's one of the singers from the Gurus. हम लोग बात करते हैं तो नहीं with the face लिखा एक पड़ी ना. ऊपर है, काम करे अभी रास्ता में है. He's coming to fix up my bathroom. So अगर रही हम जल्दी से coming to fix up your pipes. आप पाइप सब जैसे is fixing your pipes ना. प्लास्टिक पाइप निकाल के कॉपर पाइप लगा ब्रो. हाँ साले के बाथरूम सब टायर फोड़ दी से. So he's going to fix up a few things. Your plumbing में काफी कॉस्ट है ना. When things age, plumbing सबसे पहले करता है ना. So कैसे have you been? Been very busy week. और इस सप्ताह लास्ट वीक है. कुछ बकरी ला नहीं देखा? ओ हाँ देखा ना वीडियो. बकरी ला छोड़ा. माय स्टोरी में आजकल हम छोड़ देता है यार जल्दी से. तो फैंसी करता आजकल, हाईटेक करता तुम ना. नहीं माय स्टोरी करके and then what happens after 3 weeks हम कलेक्ट करके तब हम छोड़ता है, snippets from here and there. Okay. Doing great. और अब स्कूल छुट्टी आने वाला है तो लोगों को ज्यादा ग्रेजिंग टाइम रही ना नेक्स्ट वीक से. So once again दोस्तों साथियों, प्रणुल कितना सवाल आपने तैयार किया आज? सभी 5 सवाल है. पहले सभी का स्वागत हम करना चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम में. गुड टू हैव यू. रेया राज बोले रेड टी शर्ट. रेया आर
आज आर है तो हम लोग भी रेड मार दिया आज. एक्चुअली हाँ में वी नेवर प्लान कि हम लोग कौन सी पहनेगा. वी हाँ नेवर ना, रोनाल्डो वी इज जस्ट मैचेस ना. इट जस्ट मैचेस ना टेलीपैथी. वो बोले कि हमारे देखो मरून है ना, बट ऑस्ट्रेलिया में गोरा लोग मरोन बोले यार, काहे मरोन मरून. इसके बोले ना, Earlier I मरून had कलर I, पहन लिया. earlier I had blue. फिर हम सोचे कि नहीं रेड मारी यार चटक. आई यूज्ड टू हेट रेड कलर बिफोर नो कि शर्म लगे था हाँ, पहने के में. वन ऑफ माय फेवरेट्स रेड. बट हम जब इंडिया गया तो सब कलर पहने शुरू करा. पर्पल हाँ, रेड ग्रीन पिंक सब जोन कलर पिंक मिले वो भी, कलर शुरू. हाँ, सब पिंक कलर. भी पहन लिया. पिंक तो नॉमिनेटेड कलर नहीं है जैसे कि कोई के हाँ बट हाँ यू नो हाँ. हॉट पिंक भी यू नो. हम्म, So yeah, we don't actually plan कि हम लोग कौन कलर शर्ट टी-शर्ट पहने. We just happen to just go and wear it and it just matches it on just the screen. matches. ऐसे लगे हम लोग सब चीज प्लान करके आए हैं ना ऐसे नहीं. But we Listen, don't I plan. step We back. don't plan. We don't plan. Leave it. Yes. हम लोग impromptu, idly polled here, है ना. Yep. So Well, आज हमेशा की program. तरह परम, I've got Yep. all the 5 questions ready and ready to connect with people. And अगर Mm-hmm. आप पिछले last week I think it was प्रीति अमित कुमार ना, इन्होंने लगभग Yes. Fijian $130 जीता है ना. Last week we had Australian. We had a mistake. We did a Oh, mistake. we did a mistake before last week. Yeah, we माफी did a चाहते हैं. mistake. So Australian Fijian नहीं Australian $100 दे दिया ना, तो हाँ. that's all right. So आज के हम लोग Fijian $100 is up for grabs, ladies and gentlemen. Yep. कुछ नहीं करना है, बस आपको हमारा साथ देना है. बारी बारी से हम 5 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे Yep. और सही उत्तर देने पर आपका नाम जो है हम अपने ड्रॉ में Draw शामिल में करेंगे डालेंगे. और ड्रॉ में डालेंगे. अबाउट 8:30 के करीब हम आपका नाम ड्रॉ करेंगे. इफ यू आर द लकी विनर, गॉड ब्लेस यू. 8:30 Australian time. And we've got a guest today, and it is a very important topic today. Raj, you know, I think I'm going to learn quite a bit from him. You know, tips and tricks. Ki what to look for, you know, when you have a marriage problem or a relationship problem. Ki कुछ बोले जैसे कि दस्तक, दस्तक दस्तक बोले. ना हिंदी में, दस्तक दस्तक देवे ना. हाँ. So what are the Would be signs and interesting. signs and कौन सी बोले? What's the other word? Signs, symptoms तो नहीं बोलेगा because Symptoms तो नहीं बोल पाएगा. it's not the right word. Signs कि Signs. what's Signs happening, to you look know? out for. Signs to look out Signs to for look out for. before you break up Hmm. either with your partner ना. चाहे मैरिज And हो actually चाहे कभी कभी ये होता है कि लोग ब्रेकअप होते हैं बिकॉज दे आर डिप्रेस्ड. उसके जरिए से भी ब्रेकअप होते हैं. नॉट नेसेसरली कि कोई अफेयर होता है. People just, you know, sometimes I was just talking to someone yesterday and they said people sometimes, you know, they are depressed so they break up because they're not happy in a relationship. तो बहुत सारा तरह की होते हैं. अफेयर भी होते हैं, you know, depressions, gambling, और एग्जैक्टली. और हम लोगों ने सोचा कि आज क्यों अतेन को लेके आए, क्योंकि he has been through this, he is going through all these things, and so he would be the best and fresh person, fresh face in the market to tell us about what things to expect in terms of breaking up and things like that. और पर हम जल्दी से ये भी बता दें कि आज हम हमारा जो प्रोग्राम है या प्राउड स्पॉन्सर है प्रिंट वैली डिजिटल लैब. तो अगर आप किसी भी फ्लायर बनवाना चाहते हैं या ब्रोशूर है, साइनेज है, पोस्टर्स है, कैलेंडर्स है, इनविटेशन है, बिजनेस कार्ड्स वगैरह वगैरह है, आपको संपर्क करना है printvalli@gmail.com या फिर नंबर तो आपको मालूम है, वहाँ पर स्क्रीन पर है 0490 नाम तो सुना होगा. 807. नाम तो सुना होगा, प्रिंट हार्दिक बच्चन. हार्दिक बच्चन, yes, of कैमरा ना, course. कैमरा में वही. You taught me something new. हाँ. ओके. सो परम वैसे ये भी बतला दे कि हमारे जो स्पॉन्सर है हार्दिक बच्चन, उनके प्यारी सी बीवी है, आज उनका Oh, बर्थडे of है. course, yes, I saw that. बर्थडे टू रोशचंद. अभी भी हम देखा, जल्दी से हमने लिख ली. तो रोशचंद हमारी ओर से, चिट चैट फैमिली की ओर से, जितने भी लोग शामिल हैं, सभी परिवार की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे. Happy birthday. और आपके पतिदेव आपको याद किया है आज के दिन, और हमेशा की तरह कहेंगे कि दुनिया की तमाम खुशियां आपके कदम चूमे. बहुत सारे खुशियाँ चिट की ओर से आपको निछावर हो. और दोस्तों साथी आपको बता दें कि यदि शादी के कार्ड आप छपवाना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट प्रिंट वैली डिजिटल. यहाँ से पोस्ट भी कर सकते हैं. सैंपल्स के लिए उनको आप संपर्क कर सकते हैं. हालांकि वो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में आजकल काफ़ी हुए है ना. हाँ ना. और तुम कब करेगा, छपाएगा? हमार भी बर्थडे है सरिता ऋतु हमारी नीदम. बर्थडे सरिता वेरी ऋतु वेरी नीदम. बिग many happy returns of the day. सालगिरह मुबारक हो आपको सरिता, हमारी ओर से lots of blessings. हाँ. कौन सी बोला हमारा शादी कार्ड कब छपी? हाँ, बिकॉज ढेर जन पूछे से बोले परम, बोले फेसबुक पे कुछ लिखी से. मतलब कौन चाहिए? बोले लिखी से कुछ लड़की मिल गया वगैरह वगैरह. हम लोग कौन रोज. तो इट मस्ट हैव बीन द अप्रैल फूल्स डे ना. पर काहे तुम असमंजस में सबके रख दिया, बताओ. काय असमंजस में रख दिया बिकॉज अप्रैल फूल्स डे ला.
हाँ, तो सबको ने बोले हम देखा सबको ने फिर हम जाके देखा एंड एवरीबॉडी इज कांग्रेचुलेटिंग यू विदाउट हाँ, रियलाइजिंग इट्स विदाउट अप्रैल 1 ना अप्रैल 1 ना कितना स्मार्ट पीपल लोगों ने यार, दे शुड नो कि हाँ इट्स लाइक यू नो। हाँ 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 so I saw people doing that but nevertheless रोश ओके, और इस साथ में कार्यक्रम, हाँ, many many कार्यक्रम, happy returns of the day थैंक यू, थैंक यू। हम्म, तो हमेशा की तरह हर सप्ताह नहीं, लेकिन हर 2 सप्ते में हम आपके लिए मीठी जुबानी कुछ लेकर आते हैं, लेके आते हैं मीठी जुबानी परनौल की आवाज़ में। और आज हम्म, भी उन्होंने कुछ लेकर आया हुआ है, तो आज देखते हैं क्या है उसके, अच्छा क्या दस्तक है, क्या और दस्तक देता है बैकग्राउंड प्रोग्राम। म्यूजिक देना सो दोस्तों साथियों हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल शायरी से अपना जो हम चिट चैट ये शुरू करने जा रहे हैं और जितने भी लोग फिलहाल सफर में हैं अगर आप दुनिया में कुछ हासिल करना चाहते हैं या फिर आप मायूस है या फिर मेहनत कर रहे हैं कुछ फ्रूटफुल आपका लाइफ नहीं हो रहा है तो ये शायरी खास करके आपके लिए है किसी शायर ने क्या आपको कहा है दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलनी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा क्या तो बात। रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर यानी कि आप मंजिल भी मिलेगी आपको और मिलने का मजा भी आपको मिलेगा वाह वाह दैट वाह, क्या मीन्स बात। कीप ऑन ट्राइंग कीप ऑन स्ट्राइविंग यू विल बी डोंट देयर लूज योर वन होप। डोंट लूज योर होप यही कुछ कहना है आज मोटिवेशनल शायरी में प्रोग्राम को अंजाम दे रहे थे एक वेरी ब्यूटीफुल शायरी से वंडरफुल वंडरफुल। हेलो बॉयज कह रहे हैं प्रवीण प्रसाद जी, आपको वेलकम करते हैं। हम्म, और जैसे इनको मौका मिल जाता है ये जुड़ जाता है हम लोगों के साथ। हम्म। और पीछे हमारे यहाँ पे पीछे, अगर नो इफ यू कैन सी प्रोनोल, देयर इज अ फोटो हियर, कैन यू तो जस्ट हाँ मेक आउट? हेलो उमा सिंह, वेलकम टू द प्रोग्राम। दूर से तो जना है सलमान खान है पर पता नहीं आई जस्ट डोंट नो No, you are वाह right, वाह it's Salman Khan and of course इज इट Sonakshi Sinha. There's a rumor going around and रूम है कि ये रियल में है क्या है कि it मीम is है a, कौन सी है no, it is a rumor, photoshop कर लेना, so I saw it, हैं? it's photoshopped everywhere. ओह अच्छा Have you अच्छा seen अच्छा it? नहीं हम देखा टिकटॉक में Uh, इट वाज देयर द रूमर्स वर देयर अबाउट देम बट हम जब डिफरेंट क्लिप्स के निकाल के लोग दे आर डूइंग दैट yes बट आई yes डोंट yes थिंक देयर इज एनी कंटेंट इन दैट ना yep yes of course. और पर हम वैसे के प्रोग्राम में आज बता दें जल्दी से लोगों की आज विटामिन सी डे है यानी कि अप्रैल 4 है ना तो विटामिन सी डे है यानी कि आपको अपने हेल्थ के लिए नेचर करना है द बेनिफिट्स ऑफ योर हेल्थ यानी कि ढेर नींबू खाना है सबसे ज्यादा विटामिन सी नींबू में है दोस्तों साथी ऑरेंजेस में है खाते रहे मुस्कुराते रहे और विटामिन सी का जो लुत्फ है हमेशा उठाते रहे यानी कि सिर्फ आज विटामिन सी डे है तो आज ही आप खाएं अगर नहीं है जल्दी से तोड़ के लाओ प्रोग्राम में बैठो और विटामिन सी कीवी फ्रूट है पोटैटो है ये सब वगैरह वगैरह खाते रहे विटामिन सी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ और Im- आज के दिन पर ये भी mm, बतलाया गया है कि आपको तो मालूम है ना कि मार्टिन लूथर किंग mm, जूनियर 1968 में he was okay, assassinated आज के दिन पर wow. he was assassinated sorry और आपको तो मालूम सभी को मालूम है कि he was a human rights activist 50s और mm, 60s में और उसके मारने वाले थे जेम्स अर्ल रे उसके मिला 99 years in prison बाप रे बाप। हाँ, so ये हमें ख्याल रहा हम लोग मार्टिन लूथर के बारे में so he said a very good quote बोले mm, beer is made by men right बोले किस beer mm, is made by men wine by God ये boys I still remember that ना तो मर्दों के लिए beer was made by men और wine was made by God तो कौन सी पियो दोनों भी हो, दोनों पियो ना दोनों So, पियो, ladies दोनों and में खुशी gentlemen, रहो। today, 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर he was assassinated this day और आज विटामिन सी डे है और mm, एक और बात है कि आज एक बॉलीवुड शख्स का बर्थडे अगर होता तो आज होता बट दैट आज के दिन बट कौन है? दैट बर्थडे के बारे में हम बातें करेंगे इन वन ऑफ द क्वेश्चंस ओके ओके, अभी सीन डेड इस लड़का। So 5 क्वेश्चंस टुनाइट याद रखिएगा कि जीतने वाले को फिजियन $100 यहाँ से हम देंगे। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, दोज हु आर ज्वाइनिंग इन, अपने दोस्तों और
समस्त परिवार को इनवाइट कीजिएगा ताकि कोई उसमें से हकदार बने। कुछ लोग जैसे कि फिजी के टाइम चेंजेस है, वेयर दे आर 2 आवर्स अहेड। और सो प्रवीण प्रसाद ने कहा कि इन्होंने हमारा जो फीड है ये शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच प्रवीण प्रसाद जी। और साथ में यासिन अली जी ने वाह वाह कहा है। उमा सिंह न्यूजीलैंड से मेरे ख्याल से भाभी जी आप शामिल हो गए हैं, थैंक यू वेरी मच। और रेशमा जी ने पर आपके बारे में लिखा था कि हम जनता रहो फूल्स डे है, बट बोले कि हम खूब फूल करो। अच्छा अच्छा अच्छा। दिस फोटोग्राफ केम टुडे एंड लॉट्स ऑफ हरी हरी कौन रकम से लगे, देखो एकदम पूरा एकदम ओ boy, अच्छा इस गुदा। बनाना विटामिन सी ब्रो सके उसमें क्लासिफाइड है कौन सी है No, प्रोबेबली? I don't think so. I don't think so. नहीं ना विटामिन There's सी got नहीं few ना। vitamins, but the thing is कि हाँ, high in carbohydrates and potassium है। high in potassium ना। So that picture was sent to us by Ria Raj मेरे ख्याल से, और Ria Raj नेकम्बुला मेरे ख्याल से लोटोका में है। और they grow everything at home परम, it's a farm fresh bananas right। हम्म। और सभी वेजिटेबल्स ये घर पर बोती है, and then they go and sell in the Lautoka market, so that is one of the products of a hard work, So right? bananas got protein, water, carbs, sugar, fiber, and fat. Sugar, fiber, okay, Fat. but it helps in digestion as well, it's very good for Yes, digestion। खाए it's के very बाद good. में तुरंत टॉयलेट भागो। Gym में ना जाए मांगो तो you know you have हाँ, that before going to the gym. before I go to the gym I always have one, How does it have one and for number 2? number one banana, so it's good for Okay. it's good for digestion, it's good for other things as well। Yep. बोले diabetes भी control करे, but I don't know, it's got sugar and fats as well, It's got but diabetes लोग के लिए जो आदमी को diabetes है, you should be keep low in banana. keep Especially it banana low, when a green, it's good to boil and eat because correct, they haven't changed the property to like चीनी की तरह sucrose की तरह इत्यादि so but if you the younger but the you eat more the better it is. yes the more the main purpose of bananas would be it helps in digestion, that's the उसके Yep. और सब उसके अलावा इर्द गिर्द है ना। Yep. And जल्दी से बता दे कि Revival is a concert happening and Guru's band is going to be associated with it as well. तारीख है, इसका तारीख है, कौन तारीख है bro? तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख ए यार डेट तो आई डोंट अक्टूबर में अक्टूबर तुम देखो स्क्रीन पे, आप सॉरी यार अक्टूबर 20 I can't remember. देखा है तुम बुक टेप 29 डायरी निकाल के देखो, डायरी का तुम्हारा अक्टूबर 29 दोस्तों, अक्टूबर 29 रिवाइवल बाय खुशबू चोपड़ा, मनजीत सिंह और साथ में आर दीपक चंद हमारे प्रमोटर का पेशकश ही रहेगा दोस्तों, आपको Yep. हमारे साथ जुड़ना है, and we'll be talking more later on as we go along the program. Wonderful. Or if you're watching this feed from somewhere and do invite your family and friends कि हमारे साथ जुड़ जाए। और don't forget Pranol is getting ready today for the questions and the questions. Pranol कैसे हम लोग कैसे करेंगे, बाद में फायर करेंगे थोड़ी देर में ना कि अभी शुरू करें। ATEN is going to be joining us, उससे पहले हम लोग कुछ questions फायर करेगा। So it's क्या about करेगा? उससे What do पहले you think? 10 to we got 10 minutes before ATEN hops in, so when ATEN Okay, talks then right. we probably will not be able to. So Okay. let's So fire the उससे पहले question. let's find the question। और एक बहुत अच्छा मुद्दा, एक अच्छा न्यूज़ that came out of Fiji, but Fiji में उतना हलचल नहीं मचाई, but it has been making हलचल in Canada, हलचल in Australia, New Zealand as well, तो उस पर हम कुछ इसके बाद में चर्चा करेंगे। Okay. तो क्वेश्चन नंबर 1 लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको हमें ये बतलाना है किसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। इट विल बी एक एक्ट्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, Fiji के actress. बॉलीवुड एक्ट्रेस, राइट। Okay. इसके she died but she died of multiple organ failure। और दोस्तों अगर आप सही जवाब लिखते हैं, आपका नाम जो है फर्स्ट 3 नेम्स ना, लास्ट टाइम कैसे करा था परम, फर्स्ट 3 नेम्स Yes. दे गो इन द Yep. ड्रॉ, राइट। She was diagnosed with a certain kind of mental illness, right? And she died as well as diabetes। और वो बॉलीवुड 1983 में she left Bollywood in search of spirituality, and she was one of the highest paid film personalities of her time, right? बहुत सुंदर एक्ट्रेस थी। And जब JF Kennedy एयरपोर्ट में गई, and then she was handcuffed and ankle cuffed because she was suffering from this mental illness, कोई जानत नहीं रहा। And she was very bold, beautiful, और and she died, हमने बताया कौन साल, but जब ये गुजरा अपने मुंबई के फ्लैट्स में, पर you would know this ना, कि जब गुजर गए, and then after she was found after a few
एक हफ्ता मेरे ख्याल से डेड फॉर, no, she was dead for 72 hours before the body was found. And she was वो अपन she was बहुत मोटी हो गई थी, and she was using a wheelchair. She was living alone, but बहुत दिन से उसके उसके लेटर्स वगैरह नहीं बटोरा गया, तो सब पीपल वर अभी उसके बारे में ना कुछ चिंता, तो ओपन करीज देखे she was lying dead और व्हीलचेयर बगल में पड़ा, गैंग्रीन हो गया उसके गोड़ में ना, and she was found to have a gangrene on the left foot because she had diabetes, she was undergoing diabetic conditions, a wheelchair वहाँ पर पड़ा रहा, क्लाउच इधर उधर पड़ा रहा, मेडिसिन पड़ा रहा, ऑल न्यूज़पेपर्स पड़ा रहा, सो बतलाया गया है कि कुछ खाए की भी नहीं रहा उसके ना, and there was no traces of food found in her stomach, bro. और कोई फाउल प्ले नहीं रहा, बट organ failure and diabetes के कारण she died. और during her last days she converted herself to Christianity, and then she was baptized into Protestant Anglican Church. गुजरे के बाद में या क्रिश्चियन हो गया, बट फिर उसके she was from a Muslim background, तो फिर गुजरने के बाद में her relatives हुला बलू किया, and then the body was buried according to Islamic rites. And then blah blah blah, many things happened, and uske property, I mean she gave money to her family and to charities as well. फिर वो भी अभी fight में चले हैं, तो who is this lady? And uske आज birthday होता है, अगर आज she was here. She had a very cute smile. Very cute smile. रिया राज ने लिखा जीनत अमान बिल्कुल सही नहीं है. नेहा प्रसाद ने लिखा है फर्स्ट लिखी से कौन, सरिता ऋतु निधन, निधम, सॉरी निधन नहीं, माय अपॉलॉजीज, निधन तो और कुछ मीनिंग, निधम. थैंक यू वेरी मच, हैप्पी बर्थडे. इसके नाम लॉक कर लिया जाए. बट सभी लोगों ने लिखा है प्रवीण बाबी, बट सही जवाब है परवीन बाबी. आप क्या करें, स्पेलिंग के बारे में ना, तो सरिता का नाम लॉक कर लिया जाए. सरिता के नाम, यस सर. रेशमा आंटी जी लिखेंगे नाम, ऑस्ट्रेलियन है. हाँ लिख ली, खाना भी अच्छा. नहीं तब. और साथ में she donates it back, रेशमा जी. she donates it back, exactly. और नेहा प्रसाद ने लिखा है प्रवीण बाबी, बिल्कुल सही. दोस्तों साथियों, अगर आप प्रवीण बाबी के बारे में जानना चाहते हैं, the information is out there, हम रिपीट तो नहीं करेंगे. I've got lots of information about her, but if she was alive, she was born in 1954 परम, तो आज उनका बर्थडे रहता अगर आज वो हमारे मध्य में रहती. So it's very sad, she had a very sad ending. अमिताभ बच्चन के ऊपर भी लगाए रहा एलिगेशंस कि वो हमें किडनैप कर रहा. She had a lot of relation, हाँ बोले हमें किडनैप करके रख रहा. She had a relationship with अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, महेश भट्ट, डेनी डेंगजोंग पास आपके संगे. बहुत bubbly रही. She was unmarried, but towards the end she was suffering from paranoid schizophrenia. I don't know how to pronounce it. Schizophrenia, हाँ. यानी कि उसके दिमाग में और कुछ ऐसे ख्याली पलाव पकते रहे, अरे ये हमें मारे, वो हमें मारे, ये हमें किडनैप करे, वो लेके जाए. So she went through all these things, and unless she was on drugs or something, that could be the possibility. During a time she must be, but नहीं ऐसे. But when she died, she was this big, this large. She was very large. I heard she was secretly linked to Mahesh Bhatt. हाँ. Film director. Mahesh Bhatt. हाँ. पहले कबीर बेदी रहा, फिर महेश भट्ट. महेश भट्ट made a movie out of his relationship. Probably वो लम्हे एक movie रहा. I haven't seen that, but along those lines कुछ movie रहा. So yes, Parveen Babi, she had a very checkered personal life, बहुत खराब ending रहा. She had lots of money, but she died alone and without any food in her tummy and stuff like that. It's very, okay, what we'll do is we'll take a little break, and before we bring our guest on, while the people are answering the questions, Pranol, I think we've noted down the questions, and if you want to give some hints to people that हम लोग के पास 5 questions, 5 questions, one's already gone through, and Nathan is going to hang around with us for about 20 minutes. Today he's talking about breakup. Or what are the signs and signals, I suppose, signs and signals to look for कि जब the relationship is just about to go sour, or and something I've got a very beautiful question to ask him as well. Last time I drive तो अपन बारे में पूछेगा ना, पूछेगा, अब परम के बारे में पूछेगा. Boy, anytime. Here we go. एक बहुत ही अच्छा गाना ये वीडियो लड़का लोग बनाई से, and it's quite funny. Let's watch it. I wish
वापस आ जाओ, टाइम फिर से पीछे चल दे और वो मोमेंट्स फिर से आ जाए। बट आई नो वो एक सपना है। तुम तेल लगा हमें, तुम झूठ बोला हमसे, धोखा दिया हमें। तुम तेल लगा हमें, तुम झूठ बोला हमसे, धोखा दिया हमें। आज हमारा दिल नहीं, हमारा सपना टूट गए, तुम छोड़ के गया हमारा दुनिया हिल गए। कौन सी कमी रहा हमारा प्यार में, जो तुम्हें उसमें मिल गए। आज हमारा नाम नहीं, ध्यान हमारा नाम है, मेहनत करता हम, म्यूजिक हमारा काम है। आज तुम हमें कोई और के लिए छोड़ा, ध्यान तुम्हें कोई और के लिए छोड़ी। प्यार तो सब करे, तुम हमारा जान रहा, टाइम के बात है, पूरा सा जान रहा। जिंदगी टूटा, सपना भी सो गया, तू चली गई, तेरी यादों में छुपा था। आजा मेरे पास, दो हमें प्यार, शायद अब था तेरा इंतजार। तुम्हारे लिए सबके हम छोड़ा, माँ बाप भाई बहन सबसे मुंह मोड़ा। तुम तेल लगा हमें, तुम झूठ बोला हमसे, धोखा दिया हमें। तुम तेल लगा हमें, तुम झूठ बोला हमसे, धोखा दिया हमें। टाइम के बाद वक्त अब हमारे साथ है, बहुत लव करा तुम्हें दिन और रात में। हमारा ऐसा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिली, खोज के थक जाइयो तब तुम आँखी खुली। अब जोन ची भी भे, अब जाने भी दे, तुम्हारे साथ बिताए लम्हा सताने लगे। एक चीज तो जान गया, फैमिली इज एवरीथिंग। अगर तुम नहीं छोड़ता तो ये गाना नहीं मिलता। या सुनो, इला गाना वो बॉयज लोन के लिए जिलों के ब्रेकअप पे गर्लफ्रेंड छोड़ के चल दिस और बहुत हार्ड फीलिंग से गुजरे। There's a saying, 20 fish in the pond, if you take out one, there's another one. सुनो और गाओ इला लाइन। तुम तेल लगा हमें, तुम झूठ बोला हमसे, धोखा दिया हमें। तुम तेल लगा हमें, तुम झूठ बोला हमसे, धोखा दिया हमें। तुम तेल लगा हमें, तुम झूठ बोला। पीजीटीवी ऑस्ट्रेलिया से बुला और नमस्ते, आपका स्वागत है आज के शो में। चिट चिट मसाला है शो का नाम, हर एक जुबान पे एक ही नाम। तो आइए परम और प्रणोल के संग, तो आइए परम और प्रणोल के संग चिट चिट मसाला शो में। तो आइए परम और प्रणोल के संग, तो आइए परम और प्रणोल के संग। पीजीटीवी ऑस्ट्रेलिया से बुला और नमस्ते, सबका स्वागत है आज के शो में। चिट चैट मसाला है शो का नाम, हर एक की जुबां पे एक ही नाम। तो आइए परम और प्रणोल के संग, तो आइए परम और प्रणोल के संग। जी हाँ, Chit Chat Masala and it's episode number 37. We're tuned in today and आज हम वेलकम करना चाहते और हैं। उससे पहले जो गाना लगाया रखो जी, कड़वा तेल लगा इसको, तेल लगा है। Is it from New Zealand, bro? First time सुना Yes. उसका। DJ Shamiz is a friend of ours and another friend of us is actually in the forum here. DJ Zahid knows him well and yes, he resides in New Zealand. He does a lot of rapping. So, did you like the song? Actually, I आज like के जो it. topic Very है, catchy tune है ना मेरे ख्याल से। I mean, you can't get it out of your mind। और अच्छा लगे कि हमारे अपने वतन के सितारे भी आगे बढ़ते रहे। They have come up with original stuff। टॉपिक में मैच कर हमारे दिस ना आज के आज के टॉपिक आते में मैच कर टॉपिक दिस। के भी एकदम बिल्कुल रूबरू मैच कर दिस है ना। रूबरू, और रूबरू की जब बात होती है तो हमारे पास आज some very good information देने के लिए आए हैं, and I think I am also excited because I'm going to learn something from you too, because I have personally experience नहीं कोई साइकोलॉजिस्ट वगैरह से, लेकिन
I think it's something to take away, Pranol, and you also need to plan as well. So today, let's welcome, ladies and gentlemen, our friend. हम रास्ता पार क्रॉस कर दिया The park cross कर दिया. Aten Good friend भाई, कैसे Atendra हैं Nayan, कैसे हैं Aten? Right here, Bhaiya. Thank you for giving me a great opportunity to go through my experience, what I have gone through. Yeah. First of all, before I start giving my experience and all these things, I have to tell our viewers is that all these things which has come to a conclusion with that, what I am making today is after getting a professional help from psychiatrist, from a lot of consulting, a lot of people from my doctors, and also psychiatrists, and also community help from places like Catholic Care and Anglican, who have actually great experience in relationship things and all these things. And I have learned the things from them. So Aten, how long have you been? Can I ask you some questions in respect to breakup? सबसे पहले, I think let's discuss ki those signs that people should look for, and how long is it phase usually? कितना लंबा होता है ये जो phase होता है ना people की जो क्या बोले इसको यार? That moment when they decide to leave the house or divorce or something. Yes. Disperse. The time varies from couple to couple, na? Kon kaise bhai and all these things. Looking at my experiences, let's say crime patrol नहीं बताए woman बोले सतर्क हो जाओ ना, बोले कभी भी दस्तक दे ना, हाँ दस्तक तो दे, but हम लोग जो चीजें symptoms जो चीजें हम लोग वो चीज देख नहीं पाता है. हम लोग के life experience में कोई life manual नहीं है और वो चीज हम लोग देख नहीं पाता. By the time हम लोग देख पाता है वो चीज, it's all gone and it's finished. Or symptoms, first of all, symptoms is one thing is you can see some financial transactions which are not correct going the other way. Arguments are more often, and sometimes the arguments which have been solved a long time ago, it will start reoccurring. And things like a personal touch between a husband and a wife. For example, my wife will iron the clothes for me, or when I call her, say lovely words to me. Those things will deteriorate and you evaporate from your relationship. And what I found was that a relationship is like a plant. If you're not gonna water them, if you're not going to work on them, if you're not going to tender them, and they're not going to bear the fruit only they're going to bear is the separation, and that will lead to your child being taken away from you, child alienation, and actually the family alienation is another aspect of the things. I don't know what is the mantra for it. That कि हम एक चीज देखा कि तुम्हारा family और friends सब move हो जी, Facebook से तुम्हें निकाल दी, they are not there. Like I used to live a very good life, and I used to always invite regular basis at parties at my home. Thousands of people used to come. But when I went in trouble, like a separation and all these things, out of thousands of people, only I can count them with my fingers. They were left behind. And that will sit down and support me and do things like that. So the other things is going back to it, like the financials. When you go to the court case and all these things happens, then you see that the financial transactions have been like, it's like they've been evading money or putting it aside from somewhere. In demeanor between each other, it's what I can say is that the other thing is the love aspect of doing things together, even like your हाथ पकड़ के your love चलो life या दुलार करो. even your sex life will suffer too, put it bluntly, क्या put मुश्किल it this मतलब way, Pranol because तू?
बिकॉज तुम जब कनेक्टेड नहीं हो पर्सन से, यू सीम टू विड्रॉ ना. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत अपन पार्टनर्स के फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि अरे यार कुछ नहीं, यू नो हम कुछ भी करेगा, हम जाके यहाँ घूमेगा, रात रात घूमेगा, नहीं करेगा, हमारा पार्टनर विल बी ओके. हम लोग ग्रांटेड ले लेता है मोस्ट. हम के लिए एक एग्जांपल दिया वो चीज ना. और कि हम लोग ग्रांटेड ले लेता है और हम लोग वर्क नहीं करता अपन रिलेशनशिप पे. मान लो कोई आर्गुमेंट रहा है. let me stop you there. हम लोग ग्रांटेड लेता. Are you talking about male species in particular या female या दोनों? No. But if I'm talking today, it's in both perspective, between the men's side and the women's side. So it's both, you know. And the other aspect of it is it's I think it's very bad in our community is that there are a lot of wolves. I said wolves that we, you know, the worst thing you can do is on the Facebook, if you buy a new car or a new house and you put it on there are a lot of jealous people out there, and that those people I identify them as wolves. अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हुए ना, तुम्हारा प्रॉब्लम हुए, अच्छा मैं एक एग्जांपल बताई तुम्हें. एक शराबी एक फिल्म आई रहा ना, तो मन बप्पा बोले तुम कौन सी बोले प्रॉपर्टी में करना मन हम साइन कर देना. तो लड़का बोले हमारे तुम्हें कुछ नहीं दे, बप्पा बोले ना, प्राण बरते अमिताभ बच्चन जैसे बाहर गए ना, तो जो उसके अपन फायदा को उसके आदमी लोग आएंगे, अपन वो हमारा लड़की फिट हो जाएगी, यू नो, ससुर आएंगे उसके, यू नो, वो अपन फायदा को उसके उड़ंग आ जाए, समझा कि नहीं. और इन केस ऑफ व्हेन आई गो बैक टू माय रिलेशनशिप, the worst thing I have ever done that I left my family in the wolf's den. That's the worst thing I did. So you shouldn't leave your family. The thing is, you shouldn't leave to go to the wolf's den. The symptoms is कि जो wolf है, तुम्हारे relationship में जो problem start हुई, यो wolf के जो तुम्हारे घर से connection है, it will go more frequent, more phone calls. Now I look at it back. More phone calls, and then the alienation starts, you know, and all these things. And then when the partner, for example, if children are with me or with my wife, then the alienation part of the revenge part comes in, and that's the worst thing that can happen to anyone. You know, you go to the course, and children are dragged into it. You know, and also the worst thing about when you are getting all these things, and when two of you are fighting. No matter how old your child is, we think they are not listening. They are listening. They know every move. What my mom is doing, what my dad is doing, and that mentality and cycle can be imprinted to them. And what we can say is they develop PTSD. उसके एक post trauma हो जाए उसको बोले उन के लड़कन के. And after the breakup, and then one party will try to say, hey, mommy is the good one. Oh, daddy is the good one. Don't go there. This and that. You know, and then because in Australia, the worst problem about children alienation is the courts. The family court of Australia and the judges are to blame for it. What is happening is that if a mom or a dad gets a full custody, they get certain percentage of share more. And what happens? The greed comes into it. True. And when the greed comes in and all this into it, hey, I'll get that. But I don't blame a mother or a father, because once a breakup happens, separation happens, a lot of money goes into lawyers and this and that. And it's the money security what a mother and a father is looking for. I can't blame them. If my wife wants a certain percentage, of course, she has to secure her future. She knows that one partner who combined income of a person of a family is half now. So that thing comes into the place. And बोले और एक हम फिल्म कभी बैठ कर देखता है, तो उसमें एक फिल्म रहा आपकी कसम. तो मैंने गाना है जिंदगी के सफर में कुछ है ऐसे ना, तो मैंने एक वर्स से बताया ना, बोले अपनों को कभी जाने ना दो, रोक लो लोग के, नहीं तो फिर कभी नहीं. अतेन भाई, अच्छा इसमें एक बात और, जैसे कि आपने कहा है द किड्स सफर अ लॉट ना,
So I know yes. I come from a divorced family as well, ना तो अभी I'm Yeah, yeah. जो नई अभी भी है, I can still remember and reminisce those small fights and Yeah, small yeah. things that my parents used to have ना. So अगर आदमी लोग Yep. सोचे कि ओ अच्छा हम लोग फट से डिवोर्स कर देंगे ना, डिवोर्स कर लो, सेपरेट हो जाओ ना, आप अपन शेयर लो, चलते बनो. Mm-hmm. But really हिंदी में Mm-hmm. बोले बरले वो बच्चों के बारे में सोचे, चाहे कितना बड़ा छोटा लड़का रहे, it will Uh-huh. stick to them like mud. Even if they get Of married, if they course. have children, so it sticks with Yes, them. जैसे आपने yes. कहा कि बच्चा लोग लड़का लोग जो है, they observe each and every moment. They are so small, so naive Yeah, कि वो लोग नहीं सके अपन yeah. disdain देवे ना, so keep it inside. So Ha, as they ha, grow ha. old Ha. and as a mature adult, I would say, अगर हम अपन पूरा situation ले as a child growing up in a divorced family. So when we sit down and drink as brothers, so all those things, memories come up, and then you start to cry, and then so they are post genre Absolutely. it sticks with the children whole of their bloody life. Yes. There's no reset Yeah, button. yeah. So आजकल के जो Mm-hmm. parents है, I mean, they should think twice and compromise and think of the kids first, because Mm-hmm. and then they should. अच्छा वो अगर वो कह दिया है, can you tell me one more example of a दस्तक that if a couple are living together, आपने एक बतलाया है, can you tell Mm-hmm. us some more signs to observe that कि अच्छा अब तो थोड़ा दिन में जना घर टूट जाए. So what are the छोटे छोटे signs that Uh-huh. we people should look out for? The most important thing is the short temper and the anger. The anger will on little things like a plate falling down, which has nothing to do with your relationship. छोटा छोटा थिक पे बोले चिढ़ जाए ना, जैसे चिड़चिड़ा हो जाए बोले जिसको बोले, and they become more argumentative, and they are more like they can't control their younger anger. So that So means at that the other time, if partner cannot अगर plate फुटे है, so the other partner उस sign नहीं समझ पाए. That's what you're saying, ना? कि हाथ से छूट गए, गिर गए or something, कि यार क्या है, गुस्सा है, ha. or There they're are having a millions of monthly or reasons for it, something, no? I mean, men usually say monthly है Yeah, तो yeah. they disregard things like that, no? If you look Yeah, at the yeah. men's What will happen? perspective. You'll see that from that plate, it will go back all your life baddies that has happened between the relationship, and you'll know that's the time. Hey, look, whatever was solved and everything, now it's becoming fresh. So the other example I learned it with the psychiatrist and the Catholic care is what you call the explosion theory about the anger when it's happened, how it happens and why it happens, and what are the things you can do to avoid those anger. The main point is the anger. When you are in anger, what happens? Your brain, the thinking brain, basically we have three parts of the brain. The logical brain basically what you call is fight or flight mode. There's two modes to it. When two people are arguing, there's a fight and a flight mode. So what happens is that हम लोग logical thinking जो हम लोग के brain है जहाँ think हुए वो shut up हो जाए. This is हम लोग के inbuilt defense system में. अभी तो तुम्हें कोई मारे तुम धड़ाक से reflex आएगी ना, तो वो जगह हम लोग कौन चीज है, कोई भी बात वो बोली, we become defensive. And what happens? Sometimes it leads to violence and pushing, shoving each other. That's what has happened. And you are not thinking logically. Both partners are not thinking logically at all. So what happens? You have a big explosion, boom. And what happens after that? Then एक रोज बाद ये तो 2 घंटा बाद 4 घंटा बाद तुम सोचेगा साला हम कौन सी कर दिया यार. Then what happens? You have retained from your fight mode to logical thinking. So logical thinking में जब तुम आ जाए, oh, what happens? The first thing what you will do is you find remorse, right? Regretful. साला क्या कर दिया है यार, and all this. Realization and all these things. And then what you try to say sorry, but depends how much damage have you done. Sorry, when Janu, in anger, in a fight mode, but what happened? But some of the words, like between brain and tongue, there's a big filter. If you have taken that filter out, you have basically damaged your relationship. So for
to repent and do things and say, "Hi, I'm sorry," as you say, "Sorry, Janu," this and all these things. Hey, and genuinely, if you try to resolve those problems in when you are in logical state of mind, then what happens? You go back to what you call a honeymoon period. Oh, अच्छा है ये सब चीज, right? You go to the movies, अच्छा बात हुए, सब चीज हुए and all these things, ना, right? है ना? Then what happens again? What happens again? And then you Little take it for things, granted. little fire, or little thing will trigger that again. So what I'm saying, right? and what happened? You've gone back to the explosion. So you have gone back to the explosion. So आप लोग जो हमें बताया कि symptoms है ना, इलाज symptoms. अगर ये symptoms हम लोग जान जाएगा, I wish कि हमारे पास एक कोई life manual रहता, and I wish I had this help before, and I wouldn't be sitting there and talking about it. Because हम लोग के religious, हम लोग Hindu religion में हम लोग के जितना leaders है, they don't talk about it. It's shoved under the carpet. Let me And one stop you thing I there for a found out, second. Let me stop you there. आप जैसे कि बोला है religious people के बारे में. I think the first thing that happens, Pranol, is when a male and a female are having an argument, चाहे किसके भी fault है, तो बोले कोई बुजुर्ग का लगे लेके जा, बोले समझौता करा दी ना, या तो फिर पंडित के लगे लेके जा, या तो फिर priest के लगे लेके जा, मौलाना के लगे जा. फीजी में बड़कू भी तो फीजी में होता हाँ. I don't know if अभी भी हुए तो ना. हाँ, बट हम लोग की कौन सी एक चीज हम लोग भूल जाता है कि हम लोग जो आया है फीजी से एक कल्चरल बैकग्राउंड लेके आया है कि लाइक my dad was illiterate, my mother was a matriarch, how the system works, आजा रहता, नाना नानी सब बुजुर्ग संगे रहते हैं, and there was a lot of networking, community networking. हम लोग जब यहाँ आया है तो औरत लोग चाह रहे हैं कि आदमी लोग आए, तो कौन सी हम लोग थोड़ा ऑस्ट्रेलियन कल्चर में फीलिंग करे लगता ना कि ये अगर हम मैया घर में है, मैया के नर्सिंग होम भेजो, things like that, because हम लोग तो हम families for generation have looked after my parents and all these things. I'm not blaming anybody here. I'm talking about only by myself, because at this problem I can only talk about myself. In those cultural gap what we have, that's what I'm saying. Then coming back to the topic of religious people who are in the community, leaders and all this. Yes, one leader out of all I found was Bobby Singh Mishra, who was a great help, who is a religious leader and all these things. Apart from that, even my families are pandits and all these things here, I didn't have any help from anywhere. So when I went to psychiatrist, the psychiatrist started, hey, go, they are good help, there is good help. Then I found out about Catholic care. I found out of Anglican care. And they first thing they ask you, are you earning anything? Are you okay? You living alone? Are you okay? Can I give you everyday calls, so make sure that you are okay? And you won't believe it. This lady, there was a Carolina lady in Anglicare, and I was sick and all these things. She would call me every day and give me positive vibes to come out of the depression and all these things, which I think our community lacks, because we don't have any things like that at all. Aten, what I would say is this is a very interesting topic, Pranolan, and you probably do agree with me. कि बहुत सारे लोग जो फिजी में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, they are actually indulged into this thing, or somehow they are connected to this sort of a issue. It's a very vast topic, and I think what we should do is break it up. So what we should basically today only discuss is the signs of a breakup. Let's only for the next 10 minutes discuss, and any questions you want to fire up and all, you can fire questions. Let's discuss only on breakup first. It's a vast topic. But Sabri में जो आपने बताया था, it's so wonderful and so touching, and it's very touching, very touching. Yeah. So signs and symptoms, Aten भाई आपने बताया है, right? How कब से शुरू हो जाए सब चीज, कब से शुरू हो जाए? तो ऐसे जब अगर होए लगे, so अच्छा अभी तो मान लो these are the symptoms that we should notice in the partner. Right? तो अगर notice in the जितने लोग अभी सुन रहे हैं, अभी से सोचिए, अच्छा अभी तो रिफ्लेक्ट करने लगी, अच्छा वो साइन हम कल देखा औरत में, तो आदमी में, तो कौन सी आप लोग करो? अच्छा हम बताइए, अभी देखो तुम्हार बॉडी, तुम्हार लैंग्वेज, तुम्हार ऊपर कंट्रोल रहे चाहिए. अभी हम औरत उधर से कुछ भी बोले and all these things, if one person backs down and you say yes, the argument won't happen.
So the signs of whether you are getting anger, and all this thing is very, very obvious. Your body our body it will give you some signals. Your signals will be like सिग्नल से आते हैं भाई। और एक बात और है, हम लोग फिजी इंडियंस के एक स्टिग्मा है ना कि लेके हम लोग यहाँ पर भी आ गया है। आदमी बहुत जल्दी बोल दे, ए लहंगा के नीचे, you know that phrase लहंगा के नीचे बोल दे ना, that is one of the भड़कावे वाला बात है ना। I mean the world is changed. This is 2022. Nobody in the right mind should say, ए वो तो लहंगा के नीचे। No, it should not be. So these are small things उसके आदमी लोग के भड़काए भी, so they go home and then the wolves. That's what I call wolves in this section. They have to watch out for the wolves that are coming into the relationship. And the other thing is, it's look at the signs on yourself. Like if you're getting into an argument and all these things, if the sense is, if when you're getting in this, your body will start to heat up. Some of the people will start shaking. The body is telling you that you are getting into a fight mode at the moment. And you will start sweating and all these things. If you are recognizing in yourself that, hey, हमारा दही एकदम गर्म होने लगा, हम shake होने लगा है, हमारा thinking बहुत अच्छा नहीं जाए and all these things, let me back down. So what happens? Straight away, you will, after a few seconds or 10 minutes or 20 minutes, your brain will start talking logically. So that's one of the symptoms, I would say, that you have to watch, not in your other partner, but first of all, if you have to change about anything in this world, first change yourself. First find the problem in yourself. And then only you can solve the problem. If you can't see the problem, जैसे हम भले हम यूनिवर्सिटी गए, I know this thing, जाए से कोई बोले इंटेलिजेंट नहीं हो जाए. It is little things. Life is a journey. It has basically no manual. You know you go into the shit and you have to clean up the shit. That's what it is. On that note, I wanted to add two things over there. A quick reminder on argument would be, say a little prayer. A word like say a little prayer, or a word like I need a breath of fresh air. अगर आप अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हैं, if you put it into your head, absolutely. The other thing I would like to, just one thing. What you can do at that time when your body is heating up and you can't think, the best thing the God has given us is water, cold water. This is what I got it from my psychiatrist. Or you started to count back or something, 10, 9, 8 or something in your mind, and then you'll calm down. So what happens, your brain basically shuts down the fight mode. And when the water goes, water is something that our body cherishes. It's what it wants. And once you have a glass of cold water, I would say that 60 to 70% of this argument will go down. And then you slowly go down in your logical mode. You are making logic to it. Because when you're going to fight, it makes no sense. Or even go out of the situation. Just go out of it. हमारा पिल्ला class 1 में है ना, so the other day he was telling me, टीचर्स के बताई से कि स्कूल में अगर कोई से तुम गुस्सा लग गया ना, चिड़चिड़ा जाता है, वो नाम खड़ा हो के मन में 10, 9, 8, 7, 6, 1 तक गिनो. Absolutely. So this is a very old trick. कोना में बैठ के गिनो 10 से 1 तक, तब उसके बाद में आता any other word that you want to say, अतिन भाई अच्छा ये बताइए, ये सब होने के बाद में, do you believe in a second chance? I mean, if सब होने के बाद में, I know people get separated and then they want to come back, they want to join back. So should the other partner, irrespective of who he or she is, should they be giving another chance to the other partner? Is it very important? This once a trust deficit happens in anybody. So, for example, it took me 25 years to build that trust, and within few seconds, the trust was gone. So once the partner, I think both partners, for the sake of the children, do it. Sure. But the other thing I would like to
emphasize on is that people who are going to live in their past will never grow up, will never see the future. So it was hard for me to let go the past in whatever the future comes to me. That's what I'm going to thinking about. And if the trust deficit is there, I have been like reading a lot of books like there's a very good book on Amazon. It's called Divorce Poison. If people can read that, this is a very good book to read about it. So what happens is that the trust deficit will be always there between them. The mistrust will be always there for them. Unless you forgive 100%, 120%, then only it will. Because 80% of the time when partners get back together, either there will be a violence. Like in New Zealand, that guy went on Facebook and chopped the lady, married the lady for no reason. I'm totally against the violence against anybody and all these things. That was things, and it can happen unless you are both partners are 100% sure. I think sometimes we get let's do the sake of the children, but one thing we forget about is that we have a life too. हम लोग के फिजी में हम लोग बोले लड़कन को उससे बनाए दी, इसके उससे बनाए दी ना. Well, अच्छा, for the sake of the children हम लोग कर दें. But the first thing should be for you to getting back is 100%. Are you not leave everything aside, children, money, everything, and we come with the open arms and an open mind. Then only it work. The success rate, unfortunately, is only 15 to 20% of the partners getting back together. And I would say my suggestion would be to past is past, has gone. And if I'm going to look at the past, then I'll have no future. What is today, what I have, whatever little I have, little money, whatever I have, I should move on. Whether I should, but next thing is if the lessons I have taken from these things has made me super stainless steel. I'm solid like not rock. I'm solid like a diamond. So because what's I went through that. No, if things happen, yes. No, for if things happens for a reason, yes. I'm not going to genuinely go and go on a Tinder or something and looking for a partner. No, I won't do that. Why not, brother? Why not? Plenty fish in the pool. No, because very, very old saying, right? Once bitten, twice shy, So, बोले pussy के जब बोले दूध पीना जर जाए गरम दूध तो फूक के भी माठा भी पिए ना था माठा तो ठंडा है ना उसके भी फूक के पिए. But life is एक चीज आतिन भाई की ये भी बताइए. One of the he was here last week at my place. एक चीज पर इसके बताइए आतिन भाई के he has been through so much in life. And we all have seen that as friends. और एक चीज इसके में देखा है, he will never blame the marama, he बोले कि अरे अब हम कभी हम बुराई नहीं की. She gave me so many years of happiness ना, अब एंड में नहीं है. तो इसके कविता बोले ना, जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याएं और कठिनाइयों को मिटा नहीं पाएंगे. So if you keep on blaming other people, you will never find peace. No, this thing I have found in they said, that sometimes where charity begins at home and all these things. If you want to see a true reflection of you in the other person, first fix yourself. Because then if you cannot identify the problem, and if you're gonna be in a blame game, my wife I said, sometimes you have to think like 200 things she may have done bad for me, I said, but she has done 2 million good things to me. So you put it at there, with the other person, chahe my wife or husband, exactly. How they think it's their perspective. हम नहीं सकता, because वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है. जो चीज हमारे कंट्रोल में है, हम सकता वो चीज जाने, हम सकता उसके फिक्स करे, है कि नहीं? हम सकता फिक्स करे. अभी हमारी वाइफ चाहे कुछ भी बोले, हम it's okay, it's her view. I cannot change anybody's perspective about me or perception about me. But only thing I can do is to tell myself
only person who will benefit is myself. And if I'm like grumpy, I'm happy, the friends around me will be, say, hey, what happened to this guy, man? He's down, People will move away from you. So it's very important for you to fix yourself rather than the blame. Blame game will get you nowhere. Aten bhai, on the same note, a question आपके लिए हम लेकर आया, right? रास्ता में I was driving, I was thinking of to ask you. You know what happened at the Oscars, right? Will Smith and whatever happened, right? Yeah. Right. So आदमी लगा बोले है कि there is a dastak for Will Smith. There's something in there. What do you make out of this thing that happened at the Oscars? And is Will Smith in trouble? I think, Maita, if whether you're joking or not, certain things should be left aside. You should not cross that boundaries, I would say. I think he probably crossed that boundary. And at that time, he just went into the fight mode, So to the spec of the moment, maybe he went back and realized again that he has done wrong. I don't agree the violence he has done. He could have gone and told him, hey, I don't agree with that, like man to man, but the slap was over the bed. But I think the other guy, but on the other hand, if you see the comedians, they, टांग खींचे each other के ना, तो अगर हंसी मजाक वाला जगह रहे, and if you can't take the joke, don't joke. Simple, So I think he went a little bit overboard. He could have solved the problem. I agree with I think. Yeah, and I think the other guy, what was his name? Chris. He took it gracefully. He take it gracefully. I think he acted, graceful way. Well, Aten, look, it's a very vast topic for us to discuss, and we will not be able to finish this. And I would suggest in due course, माने कि आगे चल के हम आपको एक और टॉपिक देंगे इस सेपरेशन के अंतर्गत कि क्या क्या हम आज तो हमने लाइटली डिस्कस किया है, लेकिन इसको हम तोड़ के हिस्से में लोगों को हम देंगे ताकि लोग इससे कुछ लाभ उठा सके. हम जैसे लोग, जैसे कि हम और पनोल चिलबिल्ला लोग जो the topic I would like to touch in is the financial loss. How जैसे कोई जैसे एक जानवर जब मर जाए, बोले गिद्ध लोग नहीं आए, गिद्ध लोग आए खाए उसके. If one partner is a little bit revengeful and all these things, doesn't want to go to the lowest court, there will be about $500,000 loss. If you are smart enough, there is ways in Australia you can save thousands of money, which I would like to talk. There are places you can go to mediate, to find the common ground and all these things. How to do it? How to get to mediate. How to mediate? ये चंगुल में से कैसे तुम लोग सकता निकले? Because the lawyers are always there. Hungry lawyers are always there to get a big slice of it. Oh, they are like hawks, mate. They are hawks. They are like hawks. So, in Fiji, when we were there was a Fiji women's crisis. Shamima Ali ji, she was doing a fantastic job during that time. Is there a male's crisis center? Australia में है, Fiji में है. Male crisis center. I think yes. There is not. There is no, but it's run by community, not by government. Here there is government. Everything is female oriented. For example, if your wife has kicked you out, and certain places won't accept males, so it will be only for the females. So there is a stigma here in Australia, is that the violence is only towards women. You will be surprised how many it's the other way around. Exactly. Yes. Yeah, I think percentage wise have suffered too. Statistics wise लोग काम करें ना आजकल के गवर्नमेंट लोग statistics देखे कि हाँ इसमें हम इन्वेस्ट करो नहीं इन्वेस्ट. हाँ, देखो, the main thing about men is if you look through our evolution, going through, man is a little bit subspecies from a woman, I would say, in a loose word, don't count on me, that men seem to, if there is somebody died or something, you'll see that women will cry out.
Men will listen there, and then that's it. You know, this is that men doesn't. Most of the men, I can't talk for elephant. I can talk about myself. That I would like to keep it myself. You know, if something has happened to me, I try It's to the keep male it ego, among no? It's the myself. male ego. Yeah, Human. absolutely. You got the right. I didn't want to say that, but you have Right. corrected me there. You know. Yeah. Well, yeah. then look, the time is skipping quite fast, and we'll have to leave you here on that topic. It's a very interesting topic, and we will definitely talk on Very informative as well. Thank you very किस तरह much. से हम पैसे बचा Yeah, सकते yeah. हैं उसके बारे में कुछ बात ही करेंगे इन ड्यू कोर्स. Thank you All for right. your Thank you, guys. for Thank you. Dhanyawad. your time, my friend. It has been tons and tons, and I think this cannot be measured in any form or manner other than such a wonderful information that you passed on to us. And thank you very much. We wish you good yeah. luck till we hook up again. All right. Thanks, man. Thanks, you very Pranav. much, Thanks, Atendra. Param. Thank you very Thank much. you very Bye. much. Param, And let's go on a break and then we'll. PGTV ऑस्ट्रेलिया से बुला और नमस्ते. आपका स्वागत है आज के शो में. चिट चिट मसाला है शो का नाम. हर एक जुबान पे एक ही नाम. तो आइए परम और प्रणोल के संग. तो आइए परम और प्रणोल के संग चिट चिट मसाला शो में. तो आइए परम और प्रणोल के संग. तो आइए परम और प्रणोल के संग. PGTV ऑस्ट्रेलिया से बुला और नमस्ते. आपका स्वागत है आज के शो में. चिट चिट मसाला है शो का नाम. हर एक जुबान पे एक ही नाम. तो आइए परम और प्रणोल के संग. तो आइए परम और प्रणोल के संग चिट चिट मसाला शो में. तो आइए परम और प्रणोल के संग. तो आइए परम और प्रणोल के संग. Yes, ladies and gentlemen. Yes, Print Valley Digital Lab की ओर से ये प्रोग्राम लेडीज एंड जेंटलमैन और स्वागत और थैंक करना चाहेंगे दीपक रानीगा साथ में सेल्विन रानीगा को हमारे बहुत ही सुंदर सुंदर जिंगल बनाने के लिए. परम, थैंक देम ऑलवेज. और जैसे कि जल्दी से बतला दी एक बात परम कि जैसे कि हमने पहले भी बतलाया था कि जो फिजी में एक न्यूज उठा था ना, बट बहुत कवरेज नहीं मिला फिजी में, लेकिन ओवरसीज में बहुत ज्यादा कवरेज मिल गए. एंड दिस वन इज फ्रॉम एफबीसी न्यूज. हमने ढूंढ निकाला है और कहा गया है कि फिजियन बॉक्सर गोज मिसिंग आफ्टर फाइट. जानता है, सुना कि नहीं? तो बतलाया गया है कि एक फिजियन बॉक्सर फिजी से ऑस्ट्रेलिया मार्च में, दिस इज अप्रैल मार्च में ना, और फिर आई के यहाँ लुक गए. बोले लुक गए बेचारा यार. आई फील सॉरी फॉर हिम ना. उसके नाम है नेपोते. So he was on a boxing program in Australia, or he was supposed to return that night boxing के बाद में next day. However, he missed his flight. और बतलाया गया है कि
he absconded from the hotel after the fight. Fight के बाद में बेचारा घर hotel गए and then he गायब हो गया वहाँ से ना. And आइस ऑस्ट्रेलिया promoter Freddie Chand के साथ में. So Freddie Chand promoter उसके लिए आइस ऑस्ट्रेलिया में लड़ाई के लिए. But after the fight, he was in curtain raiser, but main fight was between Sonny Bill William, अगर आपने नहीं देखा है. So बेचारा अभी तो भाग के लुक गए. अब फ्रेडी चंद कौन सी करे बेचारा. I feel so sorry for him as well because उसके जिम्मेवारी पे ऐसा ना यहाँ पर सिडनी में. So चंद आप फेसबुक पे पोस्ट करी से कि I am seeking assistance on that I was aware about. तो I feel sorry for both of them. बेचारे कहाँ पर है, फ्रेडी चंद कहाँ पर है, बॉक्सर कहाँ लुका हुआ है ना. अब पहले वाला जमाना नहीं रह गया पर हम कि आए के लुक जाओ थोड़ा दिन में है ना, कंट्री साइड में लुक जाओ, then we get all those things. So it is very strict, ladies and gentlemen. अगर आप अगर आपके परिवार में कोई अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिले बाहर आने के लिए, तो ऐसे अगर करेंगे तो so the others at home they get affected. डॉक्टर बताइए से बोले कि हिट एंड रन कैसे. हिट एंड रन हो गया, एक गुस्सा मारी और होइलिस ना. तो he just ran just after the hotel same night के bro. तो I feel sorry for Freddie Chand promoter as well as नेपोते के लिए भी हमें बहुत दुख लगी. बेचारा he wants to stay back. There are other avenues, but wait the news. So what happened is that is very widespread news in Canada, America, and New Zealand. Where is it Australia as well. तो अभी पुलिस खोजे बेचारा. I don't know whether he's been found or not. It's एक दो हफ्ता के बाद है, you know. So that is one of the news that I wanted to share with the viewers today on our Chit Chat program. So जल्दी से पर हम कुछ करेगा. We go to question number 2. Yes, we better go to questions. और इसमें आए गए हैं, डॉग भी आए गए हैं आंसर देने के लिए. Looks like all the questions and answers are on the run. Ladies and gentlemen, आपको ये बता दें कि Chit जो program है, it's every fortnight, every Monday. The time difference from Fiji to here is about 2 hours, and we actually every week get sponsored to draw some funds, and primarily these funds are for anybody in Fiji who wins the competition. So we are targeting basically for some people in Fiji. So far, and we are live actually, you know, most all the time we are live. It's never recorded. तो जो भी कुछ होता है, it's actually live. जिंदा है, जैसे कि प्रणव के मोटर वहाँ पीछे अभी भी जिंदा है. अभी मोटर जिंदा है, मोटर पे बात करेगा ना. अच्छा, तो बा का छोरा को आपने दिखा दिया, अच्छा लगा. It is in New Zealand ना. अब एक बात हम बता रही पर हम you know डीजे प्रणील और दयानंद में you know there is a big contrast, big difference, but एक similarity है, you know. I played with both. I've supported them both on stage. एक चीज देखा है, दोनों जन कभी लिरिक्स नहीं देखे हुए. इसके लिए heads off to both of them, you know. Yes. दयानंद legendary उबीरा और ईबी. And बरले देखे हम प्रणील से पूछा है कुछ, कैसे तुम कर लेता है सब लिरिक्स ना. नहीं यार, बोले learn it ना, रट्टा मारे बार ना. So it's a very good thing. It's like anything, if you practice you become perfect at it. Exactly. So moving ahead to the question, Pranol. Question number 2. बहुत ज़्यादा वक्त हमारे पास है ही नहीं. We would be finishing at about what? At about 15 minutes. 45. Right. So okay. आपको ये बतलाना है, ladies and gentlemen, if you win, first 3 names go in the collection. और आपको ये बतलाना है कि first Hindu temple Fiji में कहाँ पर है. It was built by the Indian Girmites and their children, और ये western side में, and it is famous for the Ramlila festival. up to 80s में ये तो होता रहा, and it has got a unique location at the moment, west में, right? West में. And yeah, it is linked to another temple as well. And present day, it is said to be one of the most beautiful temple. कहाँ पर है, कौन सा temple है, कौन सा मंदिर ये है, आपको हमें बतलाना है. रामनवमी शुभ हो आप सभी को, आप मना रहे हैं. नांदी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है. Guess करें तो. Guess कर रहे हैं. आपको ये बतलाना है कि जो first Hindu temple in Fiji, first Hindu, नांदी with the second बाद में बना है, but the first temple. Yes, it was built by the Indian Girmites and the children. और इसका सोर्स भी मेरे पास है, आपको बतलाना है. और मंदिर के नाम बतलाना है आपको. मंदिर के नाम बताइए. You know. या चाइना कोटी बा, somebody saying. चाइना कोटी बा मंदिर का नाम क्या है? सबब के नाम है ना, चाइना और कोटी. चाइना कोटी, हाँ, बा में एक जगह है चाइना कोटी. मर्चेंट मेहमत, sorry. नेंदी छोड़ के तो लोटो का तरफ जाओ, थोड़ा उधर जाओ, आपको भी बतलाना है. बहुत फेमस है. हमारे जितने व्यूअर्स है कि आई वाच दैट आप वहां पर एक ही बार गए या 2 बार, आई मीन कितने भी बार गए होंगे.
महेंद्र पाल चौधरी हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री यूज्ड टू विजिट दिस प्लेस एज वेल. सो आपको मैं ये बतलाना है कि कौन सा हिंदू टेंपल है, आपके नाम बतलाना परम शिवन मंदिर भी हो सके ख्याल करना नाम, काफी टेंपल के नाम है. बतलाना है ये. बतलाओ जल्दी बतलाओ. मंदिर का नाम बताइए. I don't know if anybody would know the name. It's quite tough because सब बोले हैं सबब का नाम लेना बा. अच्छा ब्रेक डाउन कर दे. बोला क्लू दो लोग के. लोटोका और तावुआ के बीच में है. या स्काई देवी बताई से बोले लापातू मंदिर. She means मंदिर I suppose. मंदिर नहीं बिल्कुल नहीं. क्या यूनिक नेम्स है यार. प्रिया प्रसाद बोले से श्री सुब्रमण्य टेंपल. अब इतना ढेर नाम भी दे लगा. I might be wrong, my source may be wrong. I have to reveal the source of the name. श्री सुब्रमण्यम टेंपल नेंडी. श्री सुब्रमण्यम टेंपल नेंडी. लोटोका और तावुआ के बीच में आपको वहां पर मिलेगा एक टेंपल है. और अच्छा ये भी बतला दी रेलवे के किनारे है. पक्की को जी बोले पक्की लाइन. रेलवे लाइन से क्या पक्की लाइन के बगले में है. नावातु टेंपल बोले हैं. नावातु टेंपल डीजे जायद बिल्कुल नहीं. जब लॉक कर लिया भाई. वेले बा. मंदिर के नाम हम लोग बताते. ये तो बताओ उसके बगल में कौन खूटा गड़ा उला बताओ. वो भी क्लोज आ. ट्रेन जावे से. कहाँ से जावे पक्की लहर. बा नलोवी संगम टेंपल. बा नलोवी संगम ना. These are very good, very नामी टेंपल. गूगल करी काम यार. वेले कोहिबा. कोही क्या है. वेले टेंपल. कोई जना गूगल करे तो फैमिली ग्रीन करीस. उमा देवी जी, is that a spelling mistake from your side? What did वेले कुटी. डीजे जायद आपको तो जानना चाहिए भाई. Oh, there you go. हिंट और दे दी से. सुमनवती बोले वेले बा ना. टेंपल का नाम हम टेंपल का नाम ढूंढ रहे कि कहाँ पर है. और लोटोका और बा के बीच में ही है स्थित है. लोटोका बा के बीच में. There's certain people there, but there's spelling mistake. बगल में आउट सब मारे पोस्ट के बाहर मारे. पेनल्टी सब बाहर जाए. मारे वहीं पे ना. दोस्तों साथियों यहीं पे सही जवाब देने. अच्छा तुम कहने शुरू कर दो. हॉट कोल्ड बोलो अब. अच्छा परम अब तुम बताओ. I give it to you. You're the judge now, right? चलो लुवु मंदिर. हाँ जी. उमा देवी was the first one to say, but while I like कोही लिख दी से instead of कोटी. बट को नहीं कोटी नहीं ना बिल्कुल नहीं. while I like प्रीति अमित कुमार नहीं. डीजे जायद ने लिखा while I like कोटी. हाँ ओके. डीजे जायद के नाम लॉक कर लीजिए. while I like कोटी बा. साथ में सुमनवती भी while I like बा लिखी से. और रिया राज का नाम लॉक कर लिया जाए. सुमनवती, डीजे जायद और रिया राज. ओके लेट्स फायर द सेकंड क्वेश्चन. इसी के साथ कोटी बहुत सुंदर मंदिर है. पर अगर नेक्स्ट टाइम यू गो विजिट दिस प्लेस इट्स वंडरफुल. बोले गोलकीपर इज टू गुड. बोले राइट. नेक्स्ट वन मास्टर जी फायर करे वेले कोटी मंदिर. जल्दी कर. आपको ये बतलाना है लेडीज एंड जेंटलमैन. अगर आप सुन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपको ये पुस्तक का नाम हमें बतलाना है. अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी से गुजरे. हिंदू की चौथी पुस्तक नहीं वो तो बोल दिया. राइट. आपको ये पुस्तक का नाम बतलाना है और सही जवाब देने पर आपको ड्रॉ में शामिल किया जाएगा. और इस पुस्तक में फिजी की हम कह सकते हैं कि लोक कथाएं जो है ना, लोक कहानियां जो है ये ज्यादा मिलेगा. इस पर आधारित कहानियां जो है ये मिलेंगी. एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1969. तो फिजी की लोक कथाएं जो है कहानियां जो ये मिलेगी. और इट वाज रिटन बाय माय गुरुजी, माय फेवरेट गुरुजी. आप सभी को आप इनको जानते हैं. ही वाज अ पार्लियामेंटेरियन एज वेल, स्वर्गीय. he made several radio plays. He was in Radio Fiji as well. Radio plays, established schools and promoted Hindi on various levels. And he was awarded by the government of India, government of Mauritius, and by the local Sanatan Pratinidhi Sabha of Fiji for his immense contribution towards the literature in Fiji. And before he died, he was our lecturer at University of South Pacific. तो पुस्तक का नाम आपको हमें बतलाना है. और रातों से महाराज जी ने इन्होंने he gave blessings to this book and it was in the curriculum in the primary school and of course secondary school curriculum. Fiji in the Pacific, no बहुत कड़ा हिंदी रहा. बट उसमें he was बहुत
हाँ, डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर विवेकानंद शर्मा, ही वाज हमारे गुरुजी। उनको कौन नहीं जानता, ही वाज राइट हैंड मैन ऑफ रातुसेका मिसेस हमारा। बट आपको ये हमें बतलाना है कि बुक का नाम बताओ, राइट? एवरीबॉडी नोस, भैया बताएगा कौन तब तुम इतना बोले स्मार्ट अरे है? यार सब कुछ जाने हैं। हाँ, सबको has been क्लास 7 8 में भी पढ़ाया जाता रहा, and it's got very strong language there. English, I mean हिंदी हिंदी बहुत बुक है खराब। ब्रो, हिंदी बुक है। हिंदी बुक है। श्री विवेकानंद स्वामी, ना अभी तो वो उसके नाम है is the writer. He's the writer, Dr. स्वामी विवेकानंद शर्मा। विवेकानंद। सत्यनारायण बुक शर्मा पुस्तक के का भैया। नाम पूछ रहे ना? पुस्तक, name the book, ladies and gentlemen, name the book. जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट। मास्टर गुस्सा है जेबी। गूगल में तो नहीं मिली शायद। नहीं, लास्ट वीक बहुत इजी क्वेश्चंस कर दिया रहा भाई ना। तो बोला आज यू हैव टू वर्क फॉर द मनी, यू नो। आपको ये बतलाना है कौन सा पुस्तक है। फीजी के लोक in कथाएं, Hindi. यानी कि फेबल्स। लोक कथाएं इंग्लिश में कौन सी बोले? फेबल्स बोले ना, फेबल्स, स्टोरीज। विवेकानंद बुक्स। डॉक्टर भी नहीं जाने। डॉक्टर आप अपन टाइम पढ़ा है भैया, इला इफ यू बीन टू डॉक्टर प्राइमरी हिंदी स्कूल नहीं पढ़े से। हिंदी हिंदी व्याकरण व्याकरण। नहीं, वो बुक इन्हें लिखी से। इट इज जल्दी बताओ। हाँ, हे जल्दी बताओ, कोई पूछता है अपन हस्बैंड से पूछता है, वाइफ से पूछता है। जीदे जाहिद भैया तुम तो इसमें लॉस्ट है अभी जना है। कथाएं बोले इंग्लिश में फोक टेल्स इसमें ढेर रहा। फोक टेल्स एंड फेबल्स ऑफ पीजी की अपन टाइम में से भी रहा नाग देवता। अच्छा, उसके नाम कौन सी रफाला जोन लिखी रहा यार, व्हाट्स हिज नेम? डॉक्टर विवेकानंद शर्मा। विवेकानंद शर्मा, ओके। डॉक्टर विवेकानंद स्वर्गीय गुजर गए ना। He was a lecturer at University of the South Pacific before he died. So, और he also had the blessings of the Hindi laureate Pandit Ram Dhari Singh. उनको दिनकर के नाम से जाना जाता था। My friend died. It's quite unfortunate कि लोगों को पता नहीं है, इर्द गिर्द पूछ सबको रहे पढ़ी से। होंगे। अभी सब रामनवमी में बिजी है। अच्छा, तुम सोचो परम, लास्ट टाइम मेरी पहली पुस्तक भी पूछा रहा, बड़ा मुश्किल में आदमी लोग आंसर दिस रहे ना। But everybody had been through that. Yes. So e-book भी everybody has been through बोले that. फेस लेटा दे दो, बोले अच्छा क्लू दो, बोले अच्छा चलो क्लू देते हैं। हिंदी व्याकरण लिखी से आई थिंक somebody P प्रणव P. या परम। हाँ, चिट के लिए अल्फाबेट लिखा लीजिए, देखो पी। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में पा देवनागरी पारम स्क्रिप्ट पारम 47 पारम हम लोग पढ़े में पा 47 अल्फाबेट्स है ना। आई मीन 26 इंग्लिश में, बट हम लोग के देवनागरी स्क्रिप्ट इज 47। बहुत अच्छा है। हम लोग के लगभग बहुत क्लियर है ना। 14 वावल्स, 33 कॉन्सोनेंट्स उसमें है। सो हम लोग बहुत रिच है प्राइमरी स्कूल टीचर जो हिंदी काका गागा व्याकरण सिखाए पी से शुरू है नाम ना, तुम बोला। अच्छा सेकंड वर्ड दो, पी दे दिया, सेकंड वर्ड दो। आप कौन सी करेगा? ओ या पहली पुस्तक। and it was published in 1969। अच्छा गेस करी से पी, हम लोग बोला पहली पुस्तक मारी से। अब तो पैदा भी है टाइम। या डीजे साहिद बोले प्रशांत की लहरें। पर तुम ये हम मुंह से निकल गए। आई जस्ट समथिंग आई हर्ड, आई डोंट नो कि बुक के नाम ही कौन सी है। लड़का वो बहुत कोई सुनी नहीं है, नहीं वरी करो। अभी नहीं सुनी। हाँ म्यूट कर दो अपने आप। कोई रजिस्टर नहीं करी से। हाँ आपको मैं बतलाना है, बहुत बहुत सरल जवाब है, सुन के बहुत हंसनेगा। हिंदी पहली पुस्तक, रिटन बाय माय गुरुजी पहली पुस्तक विवेकानंद शर्मा। हम तो जवाब दे दिया, कोई क्लिक भी नहीं कर सके। कुछ नहीं, पीपल लोग सुने नहीं जाना, फटर लिखे में बिजी है लोग अभी। हाँ कोई सुनिस नहीं तुम्हें। नेवरलेस रेहा राज बोली से प्रशांत। हाँ आई यूज्ड टू नो प्रशांत। प्रशांत उसके आगे यादें जुड़ती हैं उनसे, और जब सन्नाटा होता है, किनारा, हर पल हर लम्हा इस किनारे को ढूंढते हैं। कभी यहाँ तो कभी वहां, लोग वहां पर टहलने के लिए जाते हैं। हाय रेडी मेले ने कहा है, परम जी आंसर दे दिया। अच्छा चलो, but I would give the benefit of doubt to DJ Zaid Rusty, right? He was the first one to say Prashant, right? Okay, उसके बाद में what can I? DJ Zaid, फिर सुमन,
सुमनवती फिर प्रशांत की लहरें सुमनवती, प्रशांत की and लहरें, उसके बाद में it was and सरिता ऋतु निधन. सरिता जी हैप्पी बर्थडे आप जीता Happy है birthday, huh? you are still into the league Yes, सरिता प्रशांत निधन की लहरें, ladies and gentlemen. आप सभी लोग, we have been through that in primary school. How can you forget that, my friends? I've कोई रकम रेडियो प्रोग्राम रहा प्रशांत की लहरें No, I don't know why I've heard this word no. But Vivekanand Jawara, शांत he was की a radio DJ with the लहरें थोड़ा radio plays वगैरह नेहा तुम करता था. पीछे हो गया नेहा नेहा बड़ा miss कर दी. अभी भी यूज करे लो No, it was too Okay. difficult during those time as well. I mean, the teachers who were teaching, they also said that it's got a lot of harsh vocabulary, but strong, I think. सुमन सरिता हमको इसके नाम मिस कर दिया यार Uh, सुमनवती सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन तीसरा नहीं, इसका DJ Ra, फिर सुमनवती Ra, and then And- Sarita Ritu. नहीं ये वाला नहीं Hmm. इससे पहले वाला के You are in hot soup, brother. anyway 2 3 1 2 Priti बता दी, 3 Priti would always there. okay Question we one. haven't had it Huh? okay now let's move ahead with the program it's 7:58 and let's Okay. catch up with a bit of Shairi. snippets and Google bit में of है shairi. जाहिद बोले हाँ, गूगल में है. Oh, उसके नाम काटो. गूगल में है. That's good. अच्छा अच्छा. Yes, I was. अच्छा, before we जल्दी go से- to this, before we go to the shairi, तो it's शायरी very से- important कि I actually, we should not forget. Hmm. Ladies and gentlemen, प्रणुल इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? नहीं, आप On the screen. बताइए. I'll just On the add screen. on to that. On the screen, ladies and gentlemen, you know there's a GoFundMe. It's a place where you can go and raise fund for people. You know, especially when people are sick, or you know if you need your project to be funded in some form or manner. तो यहाँ पर एक 3 साल का बच्चा है जिसका नाम है अंश. He needs some money for medical condition, and all the details are there. Hashir Ali is the one who's actually coordinating, and Hashir maaf kijiye. He's based actually in Sydney, and he doesn't know these people, he doesn't know their family, but he took the initiative to start raising funds for this. So GoFundMe is actually you can donate there. जो भी आपके हिस्से में आता है जो आप कर सकते हैं, चाहे फिजी में है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में है या न्यूजीलैंड में है, तो फिर विश्व के किसी कोने से आप देख रहे हैं, प्लीज़ डू गो एंड सपोर्ट दिस. And Hashir Ali is the organizer, and I think GoFundMe is set up as such that the money goes to the needy people. I don't know. Yes, I have done that before. So, Param, एक बात है. So, people from any corner of the world, they can Yes, access GoFund, ना? GoFund वहीं से सके, ना? So, कहीं it से doesn't भी- ask you much details, guys. Just click and then you add, and And that's it. you can be anonymous. You don't have to give your name over there as well. It just comes out of a credit card. It's tax deductible as well. So you know you So can place it as a his fund. medical conditions are such that I think he has to be brought to Australia, मेरे ख्याल से, ना, for his medical Okay. treatment. So that's happening. if I'm not wrong there, then so And ladies they and need to gentlemen, raise up to बहुत ही- $10,000. The goal is $10,000. So if you can donate whatever you can, Yep. कोई force नहीं है कुछ. अपने just- तमाम दोस्तों को आप कर सकते हैं. GoFundMe है. If you need more information, you can message me, and I would gladly share more information. Hashir Ali is based here in Sydney, and he's actually taken the initiative of working on this. Thank you very much for the initiative, Hashir Ali ji, and in relation to Yasmin Ali ji, thank you for a good cause. Thank you for तो बढ़ते हैं इस प्रोग्राम को, और बस थोड़े ही हमारे पास कीमती वक्त बचे हुए हैं जिसमें हमने गवाया है, क्योंकि अभी हमने जीतने वाले का नाम और यास्मीन जी ने कहा he will get treatment in Suva Private Hospital. Okay, my Suva bad Private there. Hospital का है. Cool. So here we go. Here we go. Let's move अच्छा ahead with the questions. Thank you, Yasmin ji. Thank you very much. Thank you very much. Questions करेगा कि कैसे की शायरी दो आया हो. हम यास्मीन जी साथ में रिया जी ने हमारे पास भेजा. Let's fire the questions. Let's finish that off, and while we're reading the shari, I'll be doing my Okay. hard work here. Thank you Okay. very much. So दो सवाल बचे हैं दोस्तों साथियों. आपको हमें ये बतलाना है कि कौन सा ब्रांड मोटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, और बतलाया गया है कि फिजी में ये Sounds जो like easy. फिजी में ये जो मोटर का ब्रांड है, it was decided to exit the Fijian market.
और ये मोटर मिला था आपको कारपेंटर्स मोटर्स में, राइट? कौन सा ब्रांड मोटर क्लू था? जना पीछे रखा ले होते लाल है तो वाइट वाला तो कारपेंटर्स ने कहा है कि इट वाज अ डिसीजन बेस्ड ऑन आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्यू इयर्स बैक ना, ब्रांड न्यू मोटर की बात करता तुम ब्रांड न्यू मोटर लोग, हाँ, तो बिकत नहीं रहा बहुत फीजी में ना, बेस्ड ऑन द लो Lexus तो नहीं सेल्स। हाँ, कौन ला? Lexus ना लेक्सस नहीं, कौन सा व्हीकल का नाम, ब्रांड का नाम हमें ये बतलाना है इन फीजी में। that they said that the vehicles over the years were very small, that they I mean the buying was very small several years back, उसका जो volume था 10% shares में से गिर गया था। So there is a time this brand decided to pull out of the Fiji market. और अभी भी Fiji में हम last time many years ago when I went to Fiji, I saw a Fijian player Fiji में, he was driving this vehicle। कौन सा है? सिमोनी ने बतलाया बेडफोर्ड, बिल्कुल नहीं कौन सा कुछ गन्ना काटेगा ब्रो तुम It's गन्ना confirmed काटेगा that this decided to exit the Fijian market। अभी आपको फिजी, अच्छा ऐसा एक क्लू और है, अभी तुम्हें नहीं दिखाई फिजी में मोटर, दिखाती नहीं है, रख रखेगा दिखाई है वेस्टर्न रेकर्स में पड़ा हुई। it is too expensive, it consumed a lot of petrol। एक फिजियन प्लेयर यहाँ से गिरा, घूमे फिजी, आई थिंक he took this car, है ना, तो वहाँ पर फिजियन देखा, हम लाइक ये फिजियन वाला चलावे, then I remembered he is one of the rugby players ना। कुछ हिंट देगा कि you just have to wait। सब पूरा हायुंडा हमारे गेस करो लाइन से फटाफट, टोयोटा है, कोरोला है, टोयोटा कोरोला है, रुपेनिन दाउदाउ, रुपेन आई रिमेंबर हिज नेम, रुपेनिन दाउदाउ ही चला था। जॉनी थोड़ा नया में आओ यार, इतना पुराना में नहीं बात करते हो अपन टाइम ले प्लीज। वेलियन नहीं, तो आपको मैं ये बतलाना है, रुपेनिन दाउदाउ his favorite car was this, he was driving in the western side, I still remember that। कौन सा नाम है? It made less profit, so it left the Fijian market। अपन टाइम में टोयोटा तो अभी भी चले हैं फिजी में, टोयोटा अभी भी चले, वेलियन तो नहीं चले हैं ना, वेलियन नहीं। Ford is still available, so that's all the common ones are not there. It has to be something. Nissan is still there in Fiji, so Nissan is still there। yeah. Long years back, but long years back, Mac long years back कितना साल के बात करता तुम ब्रो? निसान यार हम सोचता about 10 to 15 years के पहले के बात तो है। तुम जवान में भी खेले, तो इसका मतलब है जवान है लड़का, 10 साल के करीब बात करेगी अभी हम तो 10 साल के। और कौन मोटर निकला यार ना। सो कौन सा मोटर अभी आपको? अच्छा एक और क्लू है, फिजी में टैक्सीज बहुत चलता रहा ब्रांड, BMW K70 कौन सी यार? K70, oh my favorite car, K70 बहुत सुंदर। रॉयल्स रॉयस बताए रे ना, टैक्सी नहीं, टैक्सी रोल्स रॉयस K70 taxi, the ones that came from Singapore you mean to say? Ula अगर हम बता दें तो पीपल जान दी सेम टाइम, यू नो। Suzuki नहीं टैक्सी चलता, सुजुकी डब्बा वैन चलता रहा, तो इट इज नॉट अ टैक्सी रिया। टैक्सी so it was a big car। रोको टैक्सी रोक के देखो कोई जन हट से मारो, पल्ला बंद कर दो, जल्दी टैक्सी रोको। बहुत तगड़ा ब्रांड है फैल्कन फोर्ट फैल्कन नहीं, फोर्ट फैल्कन ये तो लंदन टैक्सी जमाई दी नया भी यार। अपन उसमें से लंदन टैक्सी लाइक दिखाई वाला है क्या है? अब केस पे रखा है लंदन टैक्सी, बड़ा लाम खरीद के लाए अभी जल्दी, बिग ब्लैक वन लंदन टैक्सी। इला मोटर के हम लोग मॉडल नहीं बट जिस कौन मेक के है गीता कुमार बोले मार्क 2 नहीं राइट, ओके लॉक कर लिया। 3 जन बताई दिसे, होल्डन कौन बताइए? स्काई देवी बताई से, और फिर ऊपर बहुत पहले बता दिसरा सरिता भी बता दिसरा होल्डन, एंड नेहा प्रसाद ने कहा सरिता नीदू, हाँ एंड नेहा प्रसाद, राइट होल्डन। तभी हम आज वाह टोयोटा क्राउन में खेले। टोयोटा क्राउन भी अच्छा रहा, हाँ टोयोटा क्राउन तो बहुत अच्छा रहा। डीजे राइड आज पूरा फुल ऑन मारुति बताइए इसको बोले कोरोना वाले, वाह कैसे हिला। I think Mark 2 is now at the moment, अभी काफी टैक्सीज आई से बोला ना। टोयोटा कोरोना मार्क 2
अभी तो पता नहीं Twitter is still available. Alright, moving ahead with the question. Let's finish this off. वक्त तेजी के साथ निकला जा रहा है. प्रोग्राम भी आज लंबा हो गया. क्लू हम पीछे यहाँ रखा रहा, तुम लोग नहीं जान पाया. You missed the $100. हम बताया तो पहले ही बता दिया रहा कि क्लू उसमें से 2 एक थोड़ी है. Didn't I say that? Right. Okay, last one. Right. So, for the next $100, ladies and gentlemen, आपको बताना. For the next $100 नहीं. For the next person. For the next lucky opportunity for $100, who am I? आपको मैं ये बताना कौन है. Fijian, reiterate कर देना. इस व्यक्ति को हम हमेशा याद करते हैं अपने मेमोरीज में, दोस्तों के साथ बैठते हैं, उनको याद करते हैं. कौन है ये? कौन हूँ मैं? ना किला मांदा, आप कितना जानते हैं. अच्छा, ये बतलाना है कि he died recently, right? अच्छा, his cassettes बहुत निकला है, पर you know him as well. Cassettes अपन टाइम में बहुत famous था. He used to do stage shows. गाना नहीं गाता रहा, बहुत ज़्यादा नहीं सकता बताए. But most of the time he used to sit around grok sessions. Grok sessions में तलनवा करे, ये करे, वो करे. It was very famous. बहुत अच्छा आदमी रही है. और आपको ये बतलाना है कि he was like Chris Rock. Let's put it this way. बताए देवांगे. हाय कौन है वो? आपको मैं बतलाना है. स्काई बोले my father has blue Holden का. अच्छा, अभी भी रखे से. मैं चाहिए देखिए यार, I need to. स्काई जी, अगर आपके पास अभी भी है, पिक्चर उतार के भेजना. फोटो उतार के भेजना पर उनके. I am a good collection of all these things. Michael Jackson नहीं, Fiji. I'm talking about this guy in Fiji. प्रिया जी, Fiji के बात कर रहे हैं. हिंदी में बहुत माहिर था और ई तौके में भी बहुत माहिर था. हाँ, मूड में कम थी बार रहा भजन इसके ना. हम लोग कर रहे हैं. हम लोग का हम कौन है? हमारे रकम बहुत बढ़िया आदमी था. आपका पर्सनल प्रोनाउंस. फिजी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. रिया फिजी के बारे में बात कर रहे हैं. प्रीतिमित को we're not talking about. No, we're not talking about that. He was a very big sensation. Sorry, young people said नहीं जाना था, but you can still see him on. He was not a singer, was he? He was not a singer. He was not a singer, not a musician, right? अभी खास तौर पर अभी जो पर्व चल रहा है उसको याद करना चाहिए. कल ही शुरू हुई है फिजी में रमजान. Great entertainer, I would say. Very great. Not a singer, not a musician. Nada. He was a great entertainer. He's graced a lot of stages in Fiji as well. I've already given the clue even. जमाने से हमने गाना पीत है. कैसे बोले पर? कैसे बोले? Right, so आपको ये बताना है. कौन पता है इससे जवाब? जल्दी बता दो. He had this Falanua Dakanwa. He had his favorite tribe. Falanua Dakanwa high say. Yeah. Okay. So I actually tried a couple of years ago to bring him to Australia. And then by then he said, look, my health is not good. I think this is going back 5 or 6 years, something like that. Yeah, he died a few years back. Yeah. He died in California, USA. Sahi jawab hai John Muhammad. John Muhammad, stand up comedian अपने ज़माने के बहुत ही माहिर. रेडी मेले ने सही जवाब दिया है. लिखो रेडी मेले. साथ में few people. न्यू पीपल कोई है? रेशमा जी ने बतलाया है, डीजे ने बतलाया है, सरिता. सबके नाम. I don't know why they said Michael Jackson. Then I miscalled this. They didn't. Jimmy Subidas नहीं, he's a singer. Reha Raj said John Muhammad. Raj and Yasmin ji ने कहा है John Muhammad. So he died recently, ladies and gentlemen, in California, USA. Yasmin ji, so I'm pretty sure she's going to put it towards the fund. Put it towards the Redrock. Go for it. That's a project. That's a pet project. Yeah, okay. Yep. So of course, moving ahead, and let's, ladies and gentlemen, जबकि हम ये शफल कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि आज का जो विनर है कौन होगा, let's move ahead. और कुछ हमारे जाने वाले नहीं, जो हमारे जो दोस्त हुए थे हर सप्ताह हमारे साथ जुड़ जाते हैं, उन्होंने कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल शायरीज भेजी है और अपनी मधुर आवाज में, अपर मधुर वाणी के साथ. तो ऐसे बोल दिया आप, साले मिस्टेक हो गई तो बोल यार.
क्या बात तो क्या बात स्टेज आमिर फ्लाइट भाई, देता क्या है। बात क्या बात। पर हम वैसे भी रिया राज साथ में यास्मीन जी को हम अपनी ओर से सैल्यूट टिक देना चाहेंगे कि दे बीन वेरी कंसिस्टेंट एवरी टाइम एक को प्रीवियसली। रामनवमी के पर्व और दूसरे को हाँ, हाँ, रमजान। रमजान और सब दिन ये लोग हम लोग के लिए शायरी भेजे एंड इट इज वेरी वेरी वी आर वेरी हम्बल। सो रिया राज जी, राधे राधे, आपको नवरात्र की शुभकामनाएं। और आपने लिखा है रिया जी कि भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भुला नहीं सकते, भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भुला नहीं सकते। क्या बात क्या बात। और दूसरे में आप लिखते हैं वंडरफुल वंडरफुल। वंडरफुल, कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इतनी बेरहमी से तोड़ जाएगा, कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इतनी बेरहमी से तोड़ जाएगा, जिसको चाहा जिसको चाहा खुद से ज्यादा, जिसको चाहा खुद से ज्यादा, वही वही मुझसे दूर हो जाएगा। कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इतनी बेरहमी से तोड़ जाएगा, जिसको चाहा खुद से ज्यादा, वही मुझसे दूर हो जाएगा। आजकल जिंदगी का ये दौर है ना, आजकल जिंदगी की जो आजमाई हुई बातें हैं लोगों को, काफी चीज ऐसे होते हैं कि इट्स एक्सपीरियंस ऑफ अ ह्यूमन काइंड। Yes, yes. So it's quite sad. It happens in our society these days. So sad moments इन्होंने कुछ पंक्तियों में डाला है। और आगे बढ़ते हैं परम। जी। यास्मीन जी, रमजान करीम आपको कहना चाहेंगे। और आप लिखती हैं कि चांद के दीदार से हुई माह रमजान की शुरुआत, चांद के दीदार से हुई माह रमजान की शुरुआत, अल्लाह के बंदे करने लगे दिल से इबादत, आदाब आदाब। अल्लाह के बंदे करने लगे दिल से इबादत। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, क्या बच्चे जवान और क्या बूढ़े, रखे हर कोई खुदा के लिए रोजे, परिवार के साथ सब मिलजुल के करते हैं इफ्तार, परिवार के साथ सब मिलजुल के करते हैं इफ्तार। मैं ज्यादा कुछ ना मांगू अपने खुदा से, मैं ज्यादा कुछ ना मांगू अपने खुदा से, जो दे उसी में हूँ समेट, नहीं, जो दे उसी में हूँ सहमत। लिखती हैं, करूँ मैं बस यही दुआ, करूँ मैं बस यही दुआ, या मेरे रब हो सब पर तेरी रहमत। So she is sending all the blessings to all of us in this precious moment of Ramadan. सभी को रमजान करीम मुबारक। Beautiful, जो लोग इफ्तारी कर चुके हैं और इफ्तारी करके बाद ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको थैंक यू करना चाहते हैं, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और लेट्स मूव अहेड विद द प्रोग्राम। प्रणव, आज तुम शायरी पढ़ा अपन, कोई अपन वाला पढ़ दिया शुरू में, पढ़ दिया शुरुआत। हमला नहीं पढ़ा तुम आज, तुम लिखा नहीं, तुम देखा नहीं। ओह यार, रमजान शुभ और मुबारक हो टू ऑल मुस्लिम ब्रदरन। थैंक यू डॉक्टर अनिल एंड थैंक यू परम। यार कैसे तुम मिस कर, तुम लिखा रहा। अच्छा, हम सोचता हूँ लिखा रहा ब्रो, नहीं लिखा है। I love to read your poems. You love to read my poems. Yes. Special appointment बना हमारे संगीत में सुनाई। Okay, keep sending those poems. They're wonderful and sorry, कुछ बोला? रोमांटिक फल हम नहीं है यार, तुम लोग रोमांटिक फल लोगे ना। Oh, हम रोमांटिक है। तुम हमसे कुछ सवाल पूछे मांगता रहा। You said you're going to ask some question today, but apparently you didn't. Oh, okay. हम next week के लिए रख दिया है। Not next week, the week after that. The week after के लिए सवाल। So don't forget, ladies and gentlemen, help 3-year-old Ansh for medical exam condition, and he needs some finance and some money. अगर जो भी आप देख सकते हैं, अगर हो सके तो please do not give it to us. You go to GoFund, and then Hashir Ali is doing the good cause. और GoFund के बारे में परम, it's a very credible organization, right? उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है किसी के कि पैसा नहीं जाएगा, things like that. It's a very credible, हम कह सकते हैं वेबसाइट नहीं, credible organization, GoFundMe। इसमें आप जरूर जाएं और कुछ न कुछ $5 $10 देना चाहें
up to you. वंडरफुल। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम के अंत में पहुंच चुके हैं और तो आइए ऑफ कोर्स जिंगल ऑफ कोर्स तो आइए आइए। आइए। लेकिन उससे पहले हम याद करना चाहते हैं प्रिंट वैली डिजिटल को। एंड डोंट फॉरगेट कि आप कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी की कोने में हो, तो आप वहाँ पर सो ये बहुत अच्छा लगा। मैं देखिए, स्वागत तो करो हमारा। कितना है जुलूम से बैठा हम देखा, आराम से मजा लेता है। हम जानते तुम क्या दिखाता है इसमें, तुम हैंडसम लगता है इसमें तब है ना। अरे अमिताभ बच्चन के ऊपर मजा ही लगा। ब्रदर वैसे भी हैंडसम लगता हम जब देखो तब यार। यू हैव टू से टू योरसेल्फ दैट यू लुक हैंडसम यार, कम ऑन। तब तो तुम्हें काम करी। ले ओके now लेट्स मूड। थोड़ा संगीत बजा दिया, थोड़ा म्यूजिक मांगे लगे। गाना बजा दो बेटा चच्चा। जय वीरू, हाँ जय और वीरू ऑफ कोर्स। हम लंबा है, ये पुनिया है, तो Oh, have a guess. Sarika ji ने आपको stop 1 second. So Sarika ji ने लिखा है कि what's happening with wheels for Fiji. Oh update yes, कर I दे। forgot. आज Yes. भूल गया मैं। I think The the project, पूछे करा यार। Oh my goodness. yes, the project is underway. We are project? actually looking for some information at the moment. Thank you. So it is still और, underway. Yes, still underway. और बतला दी कि सरिता जी कि we have talked to a lot of people and numbers भी मिला है ना। I mean group homes भी मिला है, wheelchairs बटोरे के लिए। So We're just waiting for some sources in Fiji to confirm In कि Fiji में कितना में मिलेगा ना। Exactly. वो Fiji में बात हो गई है। So it is underway. Project is underway. कुछ businessmen लोग से भी हम लोग बात कर लिया है। So as we progress, we will update you and of course we will get this ball rolling as Fiji में भी से हम लोग के contact जो है contact है। And if you know someone, what I think what we should do is circulate the idea is every town will be looking at somebody to help us. कि if you already know राकी राकी तावुआ, बा, लटोका, नावुआ, नसोरी में इस खास तौर पर जो मेन ज़िला है, अगर किसी को जानते हैं आप that needs it, and if you can provide us some sort of information and be helpful to us as well in sourcing that out, they'll be very grateful for us in this course. Tavua hai, some people are from Tavua, Raki में people रहते हैं. We don't want it to go to someone that actually doesn't need it. That's the main thing. केसर चंद जी, आप पहली बार लगता है जुड़े हुए, आपको हम वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में. मूविंग अहेड, प्रणुल इसको हम शफल कर दे, जोर से घुमा दे. और and a very very thank you, big thank you. And can we donate the used wheelchair? Of course you can donate the wheelchair, Priti. Of course you're welcome to, as long as the chair is in condition and somebody can use it. Why not? donate connect. Yeah, we'd love to have the picture sent to us as well, so that we can give it a plug as well, so others can get motivated and then do the same. That doesn't mean we are going to buy a brand new wheelchair, because the prices can range from $100 to $150 to lots of thousands of dollars. We are just going to see कि हमारे जो donation देने वाले को affordable हो. That's all. And Fiji में भी people can use it. तो shuffle किया है. Thank you for those who's given the answers. And once again, अगर आज के जो हमारे जवाब थे प्रणुल, फटाफट पढ़ दो and I'll spit it up. कुछ जवाब. हाँ, what was the I didn't get you, sorry. जवाब हमारे जो 5 questions के जवाब जो थे, at least people can अच्छा. keep it into the mind. So the first one was कौन सा मोटर जो फिजी में है, it is not being used anymore. It is Holden. And the other one is कौन सा comedian, stand-up comedian था, and it was स्वर्गीय जॉन महमूद जी. और कौन सा पुस्तक जो फिजी में अपने ज़माने में बहुत प्रचलित था, प्रशांत की लहरें. And question number 4 was कौन सा मंदिर है बाह में बहुत फेमस है ना, बहुत लोग जाते हैं. First made by the Girmitis that arrived there. Kutti temple. Kutti, Kutti. ना 4th है. And number 5 कौन सी, because हम सब मिटा दिया. What was number 5? हम मिटा दिया. मोटर वाला Holden. ना Holden हो गया. And then comedian and
Nevertheless, किसी को याद होगा तो जल्द चलो. We're just याद. What about- reiterating your idea. Dementia is very close, ladies and gentlemen. हाँ, अपन बारे में से नहीं बोले यार. Thank you. And let me spin this, Pranal. Okay, let's see. What do you guess? आपकी guess क्या है, Pranal? कि आज कौन जीती? Last time तुम लोग रिया बोला है ना, but दिल बोले है कि I mean probably DJ side. Jill बोले DJ Zaid. Okay. Okay, here we go. Let me spin it. Or Riya Raj, you say. Oh, Praveen Babila. Thank you, Riya Raj. Praveen Babila, कौन से एक्टर के बर्थडे आज है? That was Praveen Babila. ए तुम जब ब्रश करो Hey! ब्रश करो जाके तुम ब्रश करो जाके Hey, brush कर ये Riya Raj miss कर दी सर Riya Raj. I'm very thankful Riya Raj. DJ Zaid जीती से आज मजे के तोड़फाड़ कर लेते. And let's see who the second and the third would have been अगर आज Boy, DJ जरा Zaid की करल चीज है boy. DJ इधर से करी सी करल चीज है boy. वो ले ले कुट्टी के बगल में रहे भाई. कुछ बगल में रहे भाई. Sarita Needu, happy birthday. You would have been The next it's good to know कि अगर बड़ा होता हमारा ये you know तो आपका हम इस हकदार बनाते. So last time Riya Raj missed out by 1 point, and still today she missed out by 1 point. And yes, there you go. Riya Raj. There you go. She would have won. So She would have won, Riya Raj, she but would have, yep. Congratulations, won, Karen. She would definitely. have won DJ Zaid. Yep. Thank you very much. And ladies and gentlemen, as we depart from you in today's program, episode 37. Looking So, forward Param, to 38. before we depart, so this $100 Fijian is from the sponsor. yes. Yep. Yeah, this is from the sponsor Sprint Valley Digital Lab. R. Deepak Chand is $100 को हम लोगों को दिया है. So thank you very much everybody for taking part, and DJ Zaid, congratulations brother. Thank you. And, इसी तरह से thank you to आते Deepak रहिए Chand, प्रोग्राम में. Happy birthday है रोश चंद, happy birthday आपको. इसी तरह से आते रहिए हमारे इस छोटे से महफिल में प्यार बढ़ाते रहिएगा. और जब तक हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए, तो कोशिश ही करते ही रहेंगे. अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, एंड इट्स यू कैन ऑलवेज गिव इट टू अस. क्या हंसता तुम? प्रीति लिखे नेक्स्ट शो डेफिनेटली रिया राज विल विन. और अनिल जी लिखे से इसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा आसमान पे चांद हैं पूरा था. डायलॉग लिखी से डायलॉग लिए फिर से बोला, उसके चेहरे की चमक के सामने सदा लगा आसमान पे चांद पूरा था मगर आधा लगा. घेरा बात बोली सही. मेरा बात बोली सर तो ऊपर से चला गया मैं. लोग शायरी लिखे लगा. विश्वास करना. रिया जी Okay. ऐसे मत कहो. You should be. I'm not coming to the next show. You इतना बगल आते थे. बगल में 2 times. But I think Riya was the first one to ever win. One of the first winners of this of Chit was Riya. The very first, I think. Oh, I think really? so. Did she win that time? Okay. She's won numerous times, yes. Oh, bad bhai log. Thank you very much, Pranal, for taking part into this and being such a good sport. And I'll see you in episode 38, my friend. Episode 38. जितने भी लोग शामिल थे, thank you very much. हमारी ओर से, चिट परिवार की ओर से. Stay well, and stay blessed. Stay well, stay blessed. निसा महोदय, बुल विनाका एंड रामनवमी के शुभ पर्व सबको पर्व हो, और साथ साथ में रमजान करीम आप सबको शुभ और मंगल तथा लाभदायक हो.